Hello, 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 hello. Yeah, right. So, hi everyone, welcome to my live stream. Anything, any doubt? And here we go. Pin message. Yep. And playlist. Mm, okay. So here is my project. Not this. Okay. So just ask your doubts. Any doubts? I'm ready to help. Just ask your doubts. Anything SQL, Python, data analytics, project, anything you need to ask. I'm ready to help here in my live stream, right? Ask your doubts. Yeah. Ask your doubts. 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 Dropping null, making a pivot table. Okay. TF.
Let's copy this, paste it. Yes, I'm making a pivot table. Okay. Hmm. So let's make index. Let's make index. Hey, hi Akshay. Welcome to live stream. Welcome to live stream. So there is data science course. Yeah, you will get. You will get. Like in Coursera, there is one best data science course that is from IBM Data Science Professional Certificate. Most of our colleagues have done that. In my corporate sector, when I was working there, then most of my colleagues have done that. That is Coursera ka IBM Data Science Professional Certificate. Let me write it in the live chat so that it will be easy for you to. Coursera IBM Data Science Professional Certificate. That's the best one I would say. And that even though it is a free online course, matlab at that time it was a free online course. I don't know right now they are like it is a paid section or what, but it is the most famous one. And why I'm saying famous one, because most of my colleagues have done that, and they have given a good word of mouth and good rating as well. And if you want to move to a paid course, then Udemy is there, Data Camp is there. Udemy we have, and Data Camp. Uh, Data Camp. Let me write that. Can I learn from the start? Yeah, it is from the starting itself. Means it will. If you are asking for the IBM Coursera ka course, it is like it will cover Python, SQL, Pandas, plus visualization, plus ML basics. That I know. And related to Udemy, one thing I know, that any course in Udemy will end up with a project. So for project basis, you can go with it, because Udemy, it is like they are project oriented mostly, and I mean project based, project oriented, anything you can say. And in that as well, they have covered Pandas, NumPy, and ML basics they have covered. And in Data Camp, they have lots of I would say exercises, as the name you can see, like Data Camp. So there are lots and lots of exercises for that. And matlab real world data set, in that thing they are very much focused, right? And any more doubts? Any more doubts? Hey, hi Ankit Gupta, welcome to live stream. Welcome to live stream. Sorry, I edited. Hi, yeah. So we have like how to make database schemas, how to make database schemas related to SQL. Yeah, it is मतलब easy है आपको. First you have to, I would say, create a table. If you don't have a table, I would say, like from the base, create a table, insert values. That's the
first two part. And then when you create a schema, it is like see, you have to query the schema, I would say, not create a database. Like you have to query the schema, something like show table, describe kind of any of the columns, suppose describe sales or describe salesperson, like that you can say. And then join data, like this kind of thing, you can do that. And like it is easy and basics things, I would say. So anything like any more specific you want to know, like if you can specify, if you can specify, then I would be able to say that. We have one message like Akshay Jadhav, no sir, and Ankit Gupta. We have one more message. ERM schema in SQL. ERM is just like entity relationship schema. Are you talking about that entity relationship schema? Is it that? Like it is ER, I think. ER schema in SQL. And if you are asking ER schema, then I would say it is a way to design a database by first identifying the main entities, then their attributes, and then the relationship between them. Like I told you, na relationship between them, matlab joins करके. And once planned, each entity become a table in SQL with a primary key to uniquely identify records and foreign key to link related to table. So it is like that. So that is entity relationship schema in SQL, right? So any more doubts? Yeah, we have one message from Akshay Yadav. Like, sir, I'm in final year BE student and I choose college inquiry chatbot project for final year. This course, like, okay, help me for doing this. See, first thing first, I would say, uh, especially for parts involving data handling, I can help you in that, right? If there is a part related, or there is a, I would say, phase where you will be involving data handling in your project, I am ready to help you out. How I can help you out, like suppose like in Python programming, I can help you out. Like you need Python for, why I'm saying, because you need Python for building that chatbot logic, right? Because logic building you have to do, uh, within that chatbot logic you have to handle user input and then connect to database. So in this way, if there is data handling kind of thing, I can help you out, right? And as well as when there is data handling, you might be knowing pandas and SQL. I mean Python in SQL necessary. Python matlab pandas and numpy, these things. And if your chatbot needs to fetch college info, जैसे कि example, let's take courses, fees, department example I'm saying, from the database, then obviously you will need to use SQL and data manipulation skill. Why manipulation skill? Because everyone won't be writing their name or any data in the same format. Either there will be uppercase, lowercase, or either the date format will be changed, like that. Someone will be using slash, someone would be using dash, like this kind of thing. So in this, what will be happen, you can use SQL for this data manipulation kind of thing, and as well as pandas help you in your data if it is in CSV or Excel format. So either of you, like either of this, you can use either SQL or either pandas, right? Pandas when you will use when the data is in CSV or Excel format, and SQL you will use to directly fetch the data from the database. So database है तो SQL, right? And if you ask me in a one liner kind of thing, like this beginner friendly kind of project also you can make related to Python and data science courses by using that courses, I would say Python and data science, because you ask for the course, that's why, right? So you can combine it with tutorials on chatbot libraries, like there is one chatbot library called Chatterbot.
you can use that for building conventional interface, right? So this much information I have, and if you need any help related to data handling, I can help you out in that, right? Like you have my mail ID, I've given my mail ID here in my live chat, that is in my pinned comment. So if you want, you can send me a mail, I can help you out in that, right? Correct. Any more doubts, anything, any extra information needed or something kind of? So, okay, we have two messages from Akshay Yadav, like Jadav, like, okay, thank you, sir. Okay, yeah, sure, welcome, brother, welcome. Any help required, you can ask me in that, right? Let me refresh this live chat. Okay, refreshed, done and dusted. Let's see, any more doubts we have, we are ready to handle that, right? So, in this, we will write index here, columns, we will write country, no space, and values. We can give an aggregate function. Population, we can give some like that, or like making selecting some countries, making a pivot table with just pivot. Return reshape data frame organized by given index and column values. Okay, yeah, done. Like in will be year wise. This float. Wait, this. Oh no.
Okay, same thing. Okay, nice. Now we got it. Note. No df.
Anyone in the live stream? Hey, hi. There it HM. Welcome to live stream. Welcome to live stream. Like, hi. Please give your mail ID again. Yeah, sure. Why not? This is my mail ID. Just a minute. This is my mail ID. It is in the pinned comment section. So I have just copy pasted it here, right? And any doubts anybody have, they can ask. Mm, Ask your doubts. Any doubts you have, I can help you out in the live stream. 234 columns. Okay. Means there are 234 countries, if I can say. Two 34 countries. Hmm. Nice. So ask your doubts. Just ask your doubts. Any doubts you have. Ask your doubts in the live stream. It's like that.
Hmm. Ask your doubts. Okay.
Hey, hi. Uh, Welcome to live stream. Welcome to live stream. Okay, hi sir. Yeah, yes, yes. So you are this right? Correct. I hope I remember you. Yes, मेरा birth name है, right, right. Good, good. Let me. Nice, nice. Pivot. Uh, Actually, my mom told me to use that name. Nice, nice, brother. You should use it. Nice, nice. I hope I'm audible. Let me check the live stream. Okay, it's good. It's good. Live stream health is okay. And let's see the voice health. Okay, it's good. Yeah, let me check again. Yeah, audible. Correct. Hmm, Just a minute. Hmm. So we have one message from Berlin FF at the rate. Oops, just a minute. Hi at the rate Berlin. Welcome to live stream. Welcome to live stream. Kedarnath, like you're audible, sir, but your voice looks so down. No, no, actually, that's what I'm checking. Right, कि मतलब voice तो down. नहीं नहीं, I'm okay today. No need to worry about that. Actually, I'm a bit tired because there was a lot of work for me today. So that's why, nothing else. And any more? Okay, we have Berlin FF. Like when will we start? Actually, I'm just working on the Python project that will be live next month. Python project, it will be an end-to-end Python project, so I'm working on that, like what should be there in the project and all. So that's what I am working, and also clearing anyone doubts related to SQL Python for data analytics. So for that I am doing a live stream, so any doubts you have, I can help you out in clearing your doubts. And we have one message from Kedarnath, like NumPy revision karo. Yeah, sure, sure. Carry on, carry on. Any doubts you have, you can ask me, right? So the thing is, I am just like preparing for the end-to-end project that will be uploaded around next month. Most probably today I've done one video for that as well. You can check my YouTube channel. Actually, that is in Premiere section.
That is on 16th September. I have given premiere. I think 15th or 16th September. I have added that on premiere, so that there will be like around all the concepts as well as the project video in that Python project playlist. So that's what I'm preparing for. So everything you are watching right now in the screen, most of these concepts will be there in the Python project. So that's the thing. That's what I'm doing, and also clearing everyone doubts. Any doubt you have related to like career advice or related to any feedback for me, or I would say related to SQL, Python for data analytics, anything, I'm ready to help you out in that, right? So just ask. Visualize. So we will a line plot here. Okay. Mm, okay, format. Kind will be like that. So yeah, hi Pranshu, welcome to live stream. Welcome to live stream. Thinking of changing the field, IT field to teaching. Yeah, you can go. Teaching is a, I would say, chill kind of field. Like I would say, mental satisfaction is there in teaching. I would say. So yeah, that's a good profession as well. You can take that, and that's a good thing. I would say, because this teaching kind of field, like what it will happen, matlab, this teaching will help you to revise all those concepts that you have learned, and also will help others to gain knowledge. So it is good from both the side, right? Okay, we have one message from Pranshu: depressed due to work culture. Yeah, like everywhere it is the same. Hi Dream Johnson, welcome to live stream. Welcome to live stream. Welcome. Good evening, sir. Good evening. Did you get time to review my resume? Yeah, I have already sent you a mail. I have already sent you a mail, feedback mail as well. One day ago, like on 14th, 10:45 a.m. You check your mail ID once. I have sent you a mail related some feedback, like not full feedback. It is like what should be changed and what should be done. I have already sent you a mail. You can check that. One day ago, like 10:44 a.m. The in my
mail ID it is showing like 10:44 a.m. it has been sent from here 14 August. So you can go and check, right? I have already given some feedback, and not don't take it as a feedback, take it as a, I would say, just some tailoring in that, right? I would say tailoring in or crafting your resume. That's it. Okay, got it. Thank you. Yeah, welcome, brother. Welcome. Welcome. Okay. So what we have right now, mm, DF. Kind of. What happened in this? Yeah, okay, it's good. Hmm. Any doubts? Anybody have in this live stream? Just ask your doubts. Or should we play a quiz? I think let's keep this interactive and let's play a quiz in this. Let's go on with the quiz. It will be a multiple choice kind of quiz. And let's play for Python. Or let's play for Excel. Let's play for Excel, right? Okay. Let me write this. So first question will be the easy one. So just check that out. I have given it like which function would you use to remove extra space from text string in Excel, right? So is it trim? Is it clean? Is it substitute? Is it replace? Uh, okay. Pranshu, one good news, sir. I have applied starting in Naukri. Yeah, you should start applying. Start applying from right now. That's a good going. Start applying. And we have one message from Dream Johnson. Like, how do I calculate metrics like reduce processing time by 15-20%, or is it just wing it? No, no. Do one thing. Like, what to say? Mm, whatever project you have, do one thing without the without, no, like you have not, you might have used automation or not, that I don't know about it. But the thing is, like, whatever project I did, what I used to do, let me tell you that what I used to do, like, I used to do all those things manually. I used to open the timer, just a normal timer, no need to be that accurate. I used to just open a timer and do all the same thing in Excel first. Whatever
project I have, I used to do that same thing in Excel and note that time. And same thing I used to do that in Python and then note that time. And in this way, I used to find the percentage. You should not be that much accurate. It will be like, okay, plus minus 5% is good to go. No need to worry. Not even 5%, plus minus any number is good to go. So this is how you can calculate. What I used to do, I used to do the same kind of cleaning in Excel and same kind of cleaning in Python and note the time for that. And in this way, I used to just take the uh, I mean percentage reduce or percentage increase, like that kind of thing. Obviously, it will be percentage reduced because this many row it will take much more time in Excel. So that's the thing. Hi Samvit, welcome to live stream. West live stream. Hi Samvit, welcome to live stream. Guys, please participate in this Excel quiz, easy quiz, and just to make this session interactive, I have just given a small quiz, right? So just apply, I mean, just give your answers, and no need to worry about like if it is correct or if it is wrong. Just participate and let's see if it is correct, then it's a good thing. If not, no need to worry about. You will learn. That's it. So either you know the question or either you learn. There is no wrong answer in that, correct? So let's see, do we have any doubt or not? Any doubts? Ask in my live stream. Wow. Population. Okay. Let me write it like that. This fixed size. Sorry.
Mm, Participate in this quiz and ask your doubts. Okay, any doubts? Just ask your doubts and also participate in the quiz. Fix size. Mm, Width of the figure and height of the figure. Width. Mm, Oh, sorry.
Any doubts? Anything you need to ask? And please participate in the live quiz, right? Mm, okay, okay. Uh, any doubts? Anything you need to ask? I can help you out in this. Ask your doubts. Yeah, hi. We have a new user here. So hi at the rate. Welcome to live stream. Welcome to live stream. So what we have right now, like, can you teach me how to do all this? I'm currently a CS student, right? And I wanted to learn this, but don't know how to code. Okay, no, this is actually data analytics uh thing. Like, if you know Python, then you might be knowing about libraries like related to Pandas, NumPy. So what actually, if you ask me what I'm doing right now, the thing is I am just uh, taking out some topics for the project which I will be uploading next month. That is Python for data analytics project, and it will be an end-to-end project. So I am working for that, and in that, if you want to learn something, like you have told, you want to learn these things, so in that I will be uploading all the concepts video as well as the project video. Like, if you want, you can have a look in this SQL project. I have a SQL project in that. Right now I have actually uploaded a SQL project. You can have a look in this. This is my link. In this playlist, like, I have uh, given all the concept videos, as well as at the end there is a SQL freelance project. That is an end-to-end project where I have done data cleaning, data modification, data manipulation, everything. So this is the thing I have done. Same thing I will be doing for Python as well. And let me show you. This is the project link, direct project link. So this is the project link. So if you want to see what it is all about, you can just have a look and just wait for next month. You will be able to know how to do all these things, and I will, like, teach related, means I will teach each and every concepts, and the project will be on the basis of, I mean, I will be taking care of the fresher. That's it. That's it. So it's a project. If you can see my SQL project, in that, what I have done, I have make sure anyone who is fresher or who want to learn to code, write code or query, or who want to switch their um, department or their career or their field into data analytics, I have made sure that this project and concepts would be able to learn by them, and in that way I have done this video, or you can say the playlist, so you can have a look in that. So, and let me tell you one thing, in next video, I mean next playlist that I will be uploading next month, it will be related to the same uh, Python for data analytics, and it will be an end-to-end project. So it will be easy for you to learn. Let me tell you that. Okay.
Okay, we have one live chat from our user. Like I am doing a prediction project on Colab, but the thing is I am using Chat GPT code without knowing what to do. Okay, no issue. See, let me tell you one thing. Uh, you should at least know the basics. Why I'm saying, like you will just copy and paste code from Chat GPT and that too without understanding it. I can understand like it is very common for beginners, but uh, let me tell you at the end what will happen, you will be bit confused like what logic has been used and why we have used all this logic. That's why. So just learn the basics and then you can just take help of Chat GPT to know the logic and concept and build your project, right? So that's the thing. And if you want to move to data analytics, yeah, I am there to help you out. Any doubt you have, you can ask me. uh, any doubt you have, you can ask related to your project as well. So okay, like can you give me a quick basics? See, quick basics related to data analysis, I would say like Python for data analytics. I would say Python, you are a CSE student. It's a beginner friendly programming language which is used mainly for data handling, data cleaning, data modification, as well as see, like right now I'm doing data manipulation as well as machine learning kind of things. So in this, what will happen, like all this data frames, how this is created, these are mainly a work or you will say art of variable, list, dictionaries, loops, function, and for data pandas, like there are two libraries, pandas and numpy. So for data, pandas let you load data set, relate, like if I show you here practically, if you can see I have import two libraries here, import pandas and numpy. So what pandas does, pandas let you load the data set. How do you load a data set? This pd.read csv, and this is the, I would say, download path for in my laptop. That's the thing. So that's the use of one of the library called pandas. And right now what I'm doing, I'm using matplotlib. Actually it is already done and dusted, already imported. In between where it is I have to find out. So what matplotlib will do, it will allow visualization, like it is used for visualization purpose. I mean to say visualizing data with plots matlab ki like that, plots like this. And also enables prediction task, like you told now, prediction task. For this we have skykit, this one sci skykit learn, we have this. So for prediction task it is useful, and also for training models and making prediction, you can use that model dot predict. Like when you go through this na, you can go, you can have idea for that model dot predict. And then related to, as I was telling, matplotlib, you can have plt dot plot xy, like x and y axis, these things. And let me see. Okay, we have one more chat. Like Google Colab or Jupyter Notebook. Right now, I am using Jupyter Notebook. So, which is best and better, and why? Let me tell you, both are best, but mm, Colab, Colab is only useful when you have a better internet connection, right? Then Colab is okay. And one best thing, you know what? Like if you're working in your PC in your home using Google Colab, and you have that link of Google Colab. So what you can do, you can, suppose you go to your, what we say, college, and there you cannot take PC. Suppose, let's predict that right now you don't have a laptop. Let's predict you are having a PC. So what will happen, if you want to do code in your college, you can just have that link and do your code, or you can continue to code
for that from that collab link. So that's the good thing for that, and it works online. And if you ask me for Jupyter, Jupyter is fully offline mode kind of thing. So offline mode only for working this. If you want to import something, then you need an internet connection, right? So that's the thing. And using Google Colab, I would say you can run all the interact interactivity and printing outputs after each step to understand what happening and what gradually building, from loading data to cleaning to visualization and to predicting. That's what I can help you out in this. Like you told, you are doing for collab, so that's what I've told. A collab is good, but internet connection should be there. And Jupyter is good. Why? Because it is user friendly, and most of the corporate sectors also use this. Like, I would say, when I was working at the Amazon at that time, our data analysts, they were using VS Code as well as Jupyter both. So both they were using, depend on their flexibility. They are using that. So that's the thing. That's the thing, and you can use any of those, right? So yeah, hi Vikas, welcome to live stream. Welcome to live stream. So what we have right now, what we have right now, just a minute. Yeah. So, Vikas has told trim bhaiya. Yeah, trim is correct answer, right? I think most of them have given trim, and yeah, trim is correct answer. So what happens, trim removes all the leading and trailing spaces from the text string, and reduces multiple spaces between word to a single space. That's the use of it, trim. So yeah, that's the correct answer, because and so because we have seen best for ML. So what you want to know regarding this ML, like if you can specify, because then I could be able to help you out, right? Because like if you can specify related to ML and all, I can help you out. Like if you could be more specific, then. Acha, you tell about no SKCIT learn lab. Oh, okay, okay, yeah, yeah, right, 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 right. Actually, that is used for prediction. मतलब अगर कुछ prediction data आपको करना रहता है ना, so that is a good thing. तो मतलब जो ये क्या करता है, that enables the prediction task, right? वो enable कर देता है prediction task को, that's it. तो या, you are correct, you are correct. मतलब क्या करता है कि वो स्प्लिट कर देता है डेटा को एंड देन प्रेडिक्शन करता है, सो दैट्स द थिंग.
या ओके, आई हैव वन लाइव चैट लाइक, भैया आपके दोस्त वगैरह क्या करते हैं, मतलब लाइव स्ट्रीम करते हो इतना रात के, उन लोग आप कब टाइम देते हैं, लाइक इज इट नॉर्मल? सी मेरे पास दो ही बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, दो क्लोज फ्रेंड्स हैं एंड दे आर इनटू बिजनेस। वो लोग बिजनेस में हैं, तो उन लोग के पास भी खुद टाइम नहीं रहता उतना बात करने का, बट लेट मी टेल यू, कभी भी किसी को कुछ भी ज़रूरत होता है, अगर किसी का भी कॉल आता है, सो डजंट मैटर इफ आई एम इन लाइव स्ट्रीम और ही इज़ इनटू सम बिजनेस मीटिंग, एनीथिंग, हम लोग फ़ोन उठाते हैं एंड वी टॉक। सो मेनली हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर बात करते हैं लाइक सैटरडे संडेज में, कभी हो गया टाइम मिल जाता है तो वी टॉक लाइक एवरी वीक सैटरडे संडे हम लोग बात करते हैं। और मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं उतने, बस दो ही फ्रेंड्स हैं क्लोज फ्रेंड्स, बहुत क्लोज फ्रेंड्स बीटेक के, एंड दे आर ऑल्सो बिजी लाइक मी, लाइक दे आर ऑल्सो बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टिल 9-10 o'clock। तो बिजी शेड्यूल में कभी कभार हाँ किसी को कुछ बात करना हो गया तो वी कॉल एंड टॉक, एंड बाकी व्हाट्सएप वगैरह तो चलता है। व्हाट्सएप में मीम्स वगैरह भेजते रहते हैं, कुछ भी बातचीत करना होता है करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लाइव, मतलब यहाँ पे तो है ही ऑलरेडी, मतलब वो तो दिखा नहीं सकता चैट्स वगैरह, बट ऑलरेडी यहाँ पे है आई मैसेज में, तो वी टॉक देयर, ऑलरेडी ओपन है, वी टॉक। ऐसा नहीं है, मतलब इट्स नॉट नॉर्मल, फ्रेंड्स हैं ज़्यादा, बट फ्रेंड्स नहीं है, दैट्स इट।
Okay, we have two live chat from Vikas. Like, via your personal personally inspired. Okay, personally inspired me a lot. Like, in what sense? Like, what I have inspired you for? I am just working and helping you all. That's it. मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ और उसमें आप लोग इंस्पायर हो, देन थैंक यू, थैंक्स टू यू ऑल, लेट मी टेल यू, थैंक्स टू यू ऑल फॉर इंस्पायरिंग मी। मतलब आप लोग आते हो लाइव स्ट्रीम में, दैट इज मोर इंस्पायरिंग, लेट मी टेल यू दैट। सो इफ आई एम इंस्पायरिंग देन लिटरली थैंक यू एवरीवन। All the things like yeah, we have one live chat from Vikas. Like all the things like you study and talk, some personal things. Yeah, hats off. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Thanks to you all that you are asking me all those things, and I am telling you that. Like, if you all won't be there in my live stream, then like it would be very much dull kind of thing. Let me tell you. You all are talking with me. You all are asking me doubts. So that's what motivates me and what inspire me to do live stream each and every day. And let me tell you, I will be doing live stream each and every day. हाँ, अगर कुछ इशू हो जाता है या फिर कहीं कुछ छुट्टी में जाता हूँ निकलता हूँ, देन वो एक अलग चीज़ होगा। लेकिन जहाँ तक मैं बोलूँ, अगर आप लोग नहीं होते इस लाइव स्ट्रीम में, तो ये लाइव स्ट्रीम पूरा बोरिंग होता, लेट मी टेल यू दैट। और आप लोग डाउट्स पूछ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अगर मैं उस चीज़ से आपको इंस्पायर कर रहा हूँ, देन थैंक्स टू यू ऑल, थैंक्स टू यू ऑल। Any more live chat? I'm ready to help. I'm ready to talk. We can share our experiences, like anything related to your career, related to doubts. Yeah. Mm. Okay, we have one live chat from Vikas. Like you are real, my real big brother, elder brother. Okay, type. ऐसा आज तक कोई नहीं मिला कि कोई सही गाइडेंस दे सके, आप देते हो मीन्स कि आप मेंशन तक करते हो कि मैं जहाँ तक पता है उस टाइप से आप बताते हो, या राइट। देखो, मेरा मेन, अगर आप मेरे से पूछो कि मैं आने वाले साल में क्या करने वाला हूँ, तो दैट्स वन थिंग कि मैं टीचिंग ही कराऊंगा, क्योंकि मेरा टीचिंग प्रोफेशन ही अच्छा है। और आई मीन नॉट टीचिंग, टीचिंग वोंट बी अ गुड वर्ड, इट इज़ अ गुड वर्ड, बट आई वुड से आई वुड बी हेल्पिंग। टीचिंग तो ओनली पढ़ाना हो जाएगा, बट मेरा एक ही मोटिव है और एक ही पैशन है, बोल सकते हो, हेल्पिंग अदर्स। हेल्पिंग अदर्स इन व्हाट सेंस? इन सेंस ऑफ एजुकेशन फील्ड। तो हेल्पिंग इन एजुकेशन फील्ड मतलब काइंड ऑफ टीचिंग। सो या, मे बी 5 years डाउन द लाइन आप देख सकते हो कि शायद मैं पढ़ाना और डाउट क्लियरिंग में पूरा इन्वॉल्व रहूं, रेदर देन वर्किंग फॉर अ फ्रीलांस क्लाइंट। या क्या पता ऐसे ही चलता रहे, फ्रीलांस में भी काम करते रहूं, आप लोग को भी हेल्प करते रहूं, डाउट्स क्लियर, पढ़ाई लिखाई रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स, फिर प्रोजेक्ट्स भी लाते रहूं। फिर इवन तो मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि
मैं एक लाइव सेशन रखूं जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस रहेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि सब लोग आए एक साथ, और एटलीस्ट दिन का 2 घंटा या 1 घंटा, एटलीस्ट 1 से 2 घंटा सब बैठ के एक साथ प्रैक्टिस करें, और ऑन स्पॉट डाउट होगा तो ऑन स्पॉट डाउट क्लियर करें। मतलब क्या है कि मेरे पास जो क्वेश्चंस रहेंगे सेम क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, राइट, मतलब आप लोग सब व्यूअर्स के पास। तो क्या होगा कि सब एक साथ सेम क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे हर दिन, ताकि एटलीस्ट प्रैक्टिस बना रहे और कंसिस्टेंसी रहे। तो वो मैं प्लान कर रहा हूँ आगे करने का। तो उसके लिए क्वेश्चन सेट भी बनाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम चाहिए, बट या दिस इज माय न्यू प्लान। क्योंकि क्या है, आज के डेट में प्रैक्टिस करने के लिए लोगों को थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, या फिर कोई ऐसा साथी चाहिए जो साइड बाय साइड प्रैक्टिस करे। आई नो इट इज़ टफ, कि पढ़ाई थोड़ा बोरिंग बोरिंग रहता है सबके लिए, बट नो नीड टू वरी। मेरा वही रहेगा, एक फिक्स टाइम कर दूंगा जिसमें कि मैं भी सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, आप लोग भी सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। यू जस्ट नीड टू डू व्हाट, कि आप लोग ज्वाइन करो एंड डू द सेम क्वेश्चंस विथ मी, और बीच में कुछ डाउट्स हुआ तो आप पूछो, दैट्स इट। तो ये मेरा नया प्लान है डाउन द लाइन। बस एक बार 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, एक बार एक क्राउड आ जाए, अच्छा क्राउड, पढ़ने लिखने वाला क्राउड, अभी जैसा 500 600 का अपना क्राउड है, अच्छा पढ़े लिखाई वाला, प्रोडक्टिव क्राउड। तो उस टाइप का एक बार 1000 क्राउड्स आ जाएंगे, मतलब 1000 सब्सक्राइबर, 1000 के तादाद में अगर एक बार क्राउड्स आ जाए हमारे पास, तो क्या होगा कि उसमें भी लोग रहेंगे जिनके पास ज़्यादा नॉलेज रहेगा इन डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेज, तो वो लोग भी आप सबको हेल्प कर पाएंगे, राइट। तो इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, वंस एक बार 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो, हमारे पास एक अच्छा बड़ा सा फैमिली हो, पढ़ने लिखने वाला और प्रोडक्टिव फैमिली, देन वी कैन डू दैट थिंग, राइट। सेम नेचर भी मेरा भी है, या सेम नेचर है, दैट्स व्हाई आई थिंक वी ऑल आर इन द सेम लाइव स्ट्रीम, एंड दैट्स इट, आई थिंक दिस इज व्हाट वी कैन कनेक्ट। अच्छा भैया, आपने एक पोल, हाँ एक्चुअली पोल मतलब वो जस्ट मैं बस आया था नोटिफिकेशन naukri.com में, तो मैं सोचा कि दे देता हूँ, क्योंकि फ्रेशर्स का था और वॉक इन था, तो मैं सोचा दे देता हूँ उसमें। तो आप लोग अगर हैदराबाद से बिलोंग करते हो, या तो हैदराबाद में शिफ्ट होना चाहते हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, राइट। क्योंकि लास्ट क्या है, मैं हैदराबाद में ही था, काम कर रहा था, तो फिर तो वर्क फ्रॉम होम ले लिया। तो इसीलिए वो अभी भी हैदराबाद में ही उनका जो लोकेशन रहता है naukri.com का, वो सेट था। तो इसीलिए वहीं का ही कुछ नोटिफिकेशन आता है। तो अभी अगर कुछ नया कुछ भी आता है रिलेटेड टू डेटा एनालिटिक्स, मैं पोस्ट कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल में ही। तो आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड रहेगा उसमें अप्लाई करने के लिए, तो आप लोग अपने साइड से अप्लाई कर सकते हो, राइट। मतलब अपने साइड से कुछ थोड़ा मोड़ा हेल्प करने में क्या दिक्कत है, कर देंगे। अपने ही व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, और अपने ही क्या बोलते हैं, फैमिली में से कोई अगर नौकरी लग जाए तो दैट्स अ गुड थिंग, वो बाकी को भी रेफरेंस दे सकता है। तो वो मोटिव से मैं जस्ट पोस्ट किया था। नेक्स्ट अगर कुछ भी नोटिफिकेशन आता है रिलेटेड टू डेटा एनालिटिक्स, मैं वापस पोस्ट करूँगा, राइट। तो भैया आपने एक पोल रखा था इंटर्नशिप का, इसके बारे में बताया ना कि लाइक हैदराबाद, नो इट्स नॉट अबाउट इंटर्नशिप, इट इज़ अबाउट नौकरी ही है, वो फुल टाइम जॉब प्रोफाइल है, जॉब ऑफर है फुल टाइम का। बट वो वॉक इन रहेगा, मतलब आपको फिजिकली वहाँ जाके इंटरव्यू देना रहेगा। तो उस तरीके से। तो ओके भैया, बहुत मस्त प्लान है आपका, हेड्स ऑफ, आपके ऐसा टीचर हो तो यूनिवर्सिटी में 10 से 15 लाख नहीं, मतलब अरे वैसा नहीं है भाई। ना मैं मतलब मैं सोच रहा हूँ करूँ करके, मतलब एटलीस्ट दिन का 1 घंटा प्रैक्टिस करने में क्या दिक्कत है। तो उसके लिए एक क्वेश्चन सेट भी बना दूंगा, मतलब सीक्वल पाइथन दोनों का। और सोच रहा हूँ अगर सक्सेस रहा ये वाला चीज़, तो एक्सेल में भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन सेट सबके पास रहेगा, एटलीस्ट हर 3 3 महीने में वो क्वेश्चन सेट चेंज करूंगा, मतलब सीक्वल पाइथन एक्सेल का ऐसे एक एक क्वेश्चन सेट हर 3 3 महीने में चेंज करेंगे, ताकि एटलीस्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास रहे, सेट रहे दिमाग में। जैसे
अभी एक्सेल के बारे में मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बता दोगे क्योंकि वो आपके दिमाग में सेट है। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ पाइथन और सीक्वल और एक्सेल के भी कुछ एडिशनल टॉपिक्स सेट रहे तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्या है कि कंसिस्टेंसी हर दिन रख पाना टफ है। आई कैन अंडरस्टैंड, पढ़ाई लिखाई में कंसिस्टेंसी रखना इट इज़ अ टफ थिंग, बट स्टिल कोई अगर आपके सामने पढ़ाई कर रहा होगा तो ऑब्वियसली आपका मन करेगा कि हाँ मैं भी पढूं करके। सो दैट्स इट। सो हाय कोडर्स लोफी स्टेशन, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। जस्ट अ मिनट। कोडर्स वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। डू यू यूज चैट जीपीटी? ना, नॉट दैट मच, कभी कभार यस आई डू यूज, बट समटाइम्स, मतलब अगर कुछ अगर नया अपडेट्स आता है रिलेटेड टू पाइथन, क्योंकि पाइथन क्या है, इट्स एन ओपन सोर्स काइंड ऑफ थिंग। So any new update or any new logic or concepts if I want to learn, so rather than reading the documentation I would prefer any of the AI, like अभी तो एयरटेल से आई थिंक वी हैव गॉट परप्लेक्सिटी एआई समथिंग, तो that is also there, but I haven't used that much, let me tell you that. But most probably yeah, I use it just sometimes, like if I want to learn any easy logic, means if I'm writing this much code, like 10 lines of code, and I want to do it in a 5 line or 6 line of code, so in that way I search that is there any logic or functions or any library that I have to mm, take care of, so that the code become in a short, like no, like I don't want कि ओल्ड स्कूल वाला लॉजिक वो चलता रहे, सो दैट्स माय थिंग। या आई यूज बट वेरी लेस। या बट लेट मी थिंक टेल यू आई यूज या चैट जीपीटी एंड परप्लेक्सिटी एआई। परप्लेक्सिटी एआई recently I've started using because I have got, मतलब I think everyone knows that Airtel SIM, those who are using Airtel SIM, they will be getting a 1 year free plan for that. So yeah, in that I'm using, and chat gpt, yes, not much, but yeah, sometimes I use. So, any doubts? Anything you need to know? अभी तो बड़ा वीकेंड मिला है, लाइक फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आई मीन टू से, हाँ, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। So it will be good for you all to practice and learn new things. So we have one more message from Coders Lofi Station. Like, what is your age, by the way? 30, 30, 1995 born. So not that much age, but yeah, just I think most of you are on the same age side, मतलब 29 30 के आसपास का, I think so.
Okay, we have hi MCA coder. Welcome to live stream. Welcome to live stream. Please reply, sir. My question, like, what is the question? Like, I think let me check the activity. I think this is the first message what I have received from you, MCA coder. Like, this is the first message. So actually, can you tell what question is it so that I could know about it? Okay, we have one more message from coders Lofi Station. Like, what's your opinion about IITM, like IIT Madras, data science, BS degree course? I think, see, first thing first, it's an IIT standard, so it would be good. Like, it is an government backed data science course, so yeah, it will be good. You can take that. I don't have that much idea about it, but if you check about the course curriculum, if they are having lots and lots of like industry aligned program, or I would say if they are having a good project, because see, I know IITM will give you a certification at the end, but you have to check these two things, that is industry aligned program, means industry standard program, plus the project, if it is aligning your interest and your uh, future for career, then yeah, you can go for it, and no need to worry. It's a good thing. I mean to say, like, IITM data science degree, so it's a good thing, and that certification will also be much more valuable to you, right? Yeah, you can go for it. If you want, you can go for it, because uh, that's a, like, I would say, government backed question, so a government backed course, so you can go for it, because that certification will be very much useful, right? ओके, वी हैव वन मैसेज फ्रॉम विकास, लाइक, एक चीज़ जैसे आपने प्रैक्टिस वगैरह ख़त्म हुआ तो आप ये सब बताना कि मीटिंग जब होता है, लाइक स्टेक होल्डर वो क्या बोलते हैं, उसके रिप्लाई क्या दूं, लाइक मीटिंग में पूछ सकते हैं स्टोरी टेलिंग वगैरह। स्टोरी टेलिंग वगैरह इज़ नथिंग यार, सी, अभी रिलेटेड टू आपके पास जैसे आप अगर मेरा सीक्वल वाला देखोगे प्रोजेक्ट, तो उसमें जस्ट नॉर्मल स्टोरी टेलिंग है। सेम चीज़ हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में ही करते हैं। मतलब क्या है कि जो आप टेबल निकालते हो ना फ्रॉम द डेटा, उस टेबल को एक्सप्लेन करना ही स्टोरी टेलिंग बोला जाता है। बट वो बात है कि सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी हिसाब से। ओके, अगर आप लोग को ये सीखना है तो अभी जो नेक्स्ट ये रहेगा ना प्रोजेक्ट, जिसमें कि पाइथन रिलेटेड प्रोजेक्ट रहेगा एंड टू एंड, उसमें थोड़ा स्टोरी टेलिंग का मैं बता दूंगा, एक अलग से सेक्शन रखूंगा स्टोरी टेलिंग का, या फिर अलग से एक वीडियो बना दूंगा स्टोरी टेलिंग का, ताकि आप लोग समझ सको कि ये क्या क्वेश्चन पूछते हैं और कैसा आंसर देना है, ठीक है? वो मैं कर दूंगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, जो है वो मैं अलग से एक वीडियो बना के रखूंगा, उसी प्लेलिस्ट में ही अलग से एक वीडियो बना के, मतलब एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बना दूंगा, एंड आफ्टर दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो मेल वाला एक्सप्लेनेशन करेंगे, मतलब ऐसे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन आया है फ्रॉम फ्रीलांस क्लाइंट कि ये सब टेबल के बारे में हमें बताओ, तो हम लोग उसी क्वेश्चन को मेल में लिखेंगे एज अ स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? और मैं आपको साइड बाय साइड समझाते भी रहूँगा वीडियो में। तो ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा प्रोजेक्ट रिलेटेड टू पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स, उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल क्या होता है बैकएंड में, राइट? तो वो मैं
कर दूंगा। और मीटिंग में भी वही सब चीज़ पूछते हैं, मतलब क्वेश्चंस को ही प्रॉपरली आंसर करना विद द हेल्प ऑफ टेबल। मतलब आप जो टेबल निकालते हो ना एट द एंड, विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल और इनसाइट्स, जो आप समझाते हो सामने वाले को, सामने वाले के क्वेश्चन को जब आप समझाते हो विद द हेल्प ऑफ टेबल, उसे एक काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग बोला जाता है। तो मैं वो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट रहेगा उसमें मैं एक अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा उसमें, ठीक, उसी प्लेलिस्ट में ही रहेगा, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाए कि एक्चुअल है क्या, मतलब जो मैं बोलता रहता हूँ स्टोरी टेलिंग, डेटा मैनिपुलेशन, ये सब, इट विल बी ओके, ठीक है। एमसीए कोडर सर, एचओ हॉट, हाउ हॉट इज माय, मतलब सॉरी, एमसीए कोडर आप एक बार थोड़ा स्पेसिफाई कर सकते हो आपका क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली क्या है। आपका पहला बार यहाँ चैट आया, इसलिए मतलब मैं अगर चैट एक्टिविटी देखूँ तो फर्स्ट टाइम ये चैट आया हुआ है, तो इसीलिए। तो अगर आप वो क्वेश्चन रिपीट करके बोल सकते हो कि क्या आपने क्वेश्चन पूछा, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। हाँ विकास, लाइक जितना भी होता है सारा, हाँ राइट राइट राइट, मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप लोग के लिए एक वीडियो ही बना दूंगा, अलग से प्लेलिस्ट में ही रहेगा, अलग से पूरा स्टोरी टेलिंग का एक वीडियो रहेगा, उसमें मेल कम्युनिकेशन के थ्रू मैं आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अभी मीटिंग का तो मैं कैसे समझाऊंगा, सामने कोई एक आदमी चाहिए मीटिंग के लिए, तो एक क्या काम करूंगा, एक मेल हम लोग प्रेडिक्ट कर देंगे, जैसे कि पिछले प्रोजेक्ट में हमने किया था मेल कम्युनिकेशन टाइप का, तो उस टाइप का मैं करके एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ताकि और क्लियर आइडिया हो जाए कि व्हाट am I talking about related to storytelling and all that, right? Uh, Hi Arjun, welcome to live stream. Hi Arjun, welcome to live stream. Oh, sorry, I'm very sorry. Sorry for the spelling mistake. वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। सर फ्रीलांस और वर्क फ्रॉम होम टाइप जॉब में एंट्री कैसे लें? सर 1 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के अंडर काम करना नहीं चाहता। देखो यार, वो तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं तो 5 इयर्स तक मैं अपना कॉर्पोरेट काम चलाते रहा, साइड बाय साइड फ्रीलांस का भी काम करते रहा, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा, अभी अगर आप काम कर रहे हो, जो आपका वर्क एक्स है, उसके साथ आप फ्रीलांस खोजते रहो। और लेट मी टेल यू, फ्रीलांस है थोड़ा टफ, जस्ट लाइक जॉब ऑफर्स, फ्रीलांस भी थोड़ा टफ रहता है खोजना। और फ्रीलांस आपको तभी मिलता है जब आपका कुछ एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि आपने बताया आपका एक एक्सपीरियंस है, तो उसी के बेसिस पे आप फ्रीलांस काम खोजो। और जब आपका फ्रीलांस का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, जैसे मैं जब जॉब छोड़ा तब मेरा 7 फ्रीलांस क्लाइंट के साथ एक्चुअली मैंने काम कर चुका है, राइट। तो उसके बाद ही मैंने जॉब छोड़ा, राइट। प्लस मेरा जॉब में भी 5 ईयर एंड 5 मंथ्स का वर्क एक्स है। तो इसीलिए मतलब एक जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा रिलेटेड टू डेटा, मतलब जो भी आप फील्ड में काम कर रहे हो, जो भी आप फील्ड में फ्रीलांस कर रहे हो, एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, तभी आप नौकरी छोड़ के फ्रीलांस में काम कर सकते हो, राइट। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में छोड़ दोगे तो फिर आपको एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, लाइक हाउ थिंग्स वर्क एंड हाउ थिंग्स गोज ऑन। तो वो सब जानने के लिए एटलीस्ट थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो वो आप काम मत छोड़ो, काम करते रहो, साइड बाय साइड फ्रीलांस का काम खोजते रहो, ठीक है। तो उससे एटलीस्ट दोनों साइड से आपका एक्सपीरियंस होता रहेगा, करेक्ट। तो इसलिए बोल रहा हूँ, बट वही बात है, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा खोजने में। क्योंकि क्या है कि फ्रीलांस काम इतना इजीली आज के डेट में मिल नहीं रहा, मतलब पहले भी नहीं था, पहले मैं तो बोलूँ, अभी भी अगर मेरा ये फ्रीलांस क्लाइंट का मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, 8वां फ्रीलांस क्लाइंट का, तो मुझे नेक्स्ट फ्रीलांस क्लाइंट खोजने के लिए मोर देन 100-150 सर्च तो करने पड़ेंगे, तब जाके ही होगा। और ओके, मैं इसका आंसर दे देता हूँ, विच फंक्शन हेल्प यू टू रिमूव।
और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। करेक्ट आंसर या। मैं तब तक लेट्स गिव अ सेकंड क्वेश्चन फॉर दैट। ये थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो मैं अभी दे रहा हूँ क्विज में, ये आप लोग एक्सेल में ट्राई करके देख सकते हो, राइट? क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो ये आप एक्सेल में टाइप करना एंड देन आप ऑप्शन सिलेक्ट करना, करेक्ट ऑप्शन, राइट? मैं टाइप कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला काउंट्स ओनली द न्यूमेरिक वैल्यूज फ्रॉम रेंज। आप A1 से A10 जाना है एक्सेल में, और उसमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज लिखना, और देन ये चारों जो ऑप्शंस है उसमें से सारे यूज करना और देखना कौन सा सही आंसर है, फिर इस पोल में आंसर देना। काउंट ए, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला काउंट्स ओनली द न्यूमेरिक वैल्यूज इन अ रेंज A1 से A10। बाकी ऑप्शंस है। अच्छा, वी हैव वन मैसेज फ्रॉम अर्जुन सर, चूना लगा रहे हैं ये कंपनी वाले, जूनियर टैग देकर कम सैलरी में सीनियर लेवल काम करवाते हैं। प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट, कोडिंग, फ्रंट एंड बैक एंड सब में ही कर रहा हूँ। तो अच्छा, सी फर्स्ट थिंग फर्स्ट भाई, सबका यही सीन था। मैं जब स्टार्ट किया था अपना करियर, तो उस टाइम मेरा भी सैलरी अराउंड 11,500 पर मंथ था, और 12 घंटे का ड्यूटी था। तो सबका स्टार्टिंग वैसे ही रहता है। नो नीड टू वरी अबाउट। बेस्ट थिंग इज कि एटलीस्ट आप ये सब कोडिंग वगैरह का आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। लोगों के पास ये एक्सपीरियंस मिलने के लिए भी लोग खोज रहे हैं जॉब के लिए, तो आपके पास एटलीस्ट ये सब एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा सह लो, मेहनत कर लो, फिर उसके बाद स्विच करना, या तो फ्रीलांस क्लाइंट खोज के यू कैन लीव द जॉब इफ़ यू वांट टू। बट अभी एक्सपीरियंस लो, एटलीस्ट 1 ईयर का है, ठीक है, बट एटलीस्ट 5 ईयर का एक प्रॉपर बेसलाइन एक्सपीरियंस बना लो, उसके बाद यू कैन डू लाइक, उसके बाद आपका बहुत वैल्यू हो जाएगा मार्केट में, कि आप कहीं पे भी स्विच कर सकते हो। और इवन तो फ्रीलांस का भी खोजोगे तो चांसेस है एटलीस्ट इंटरव्यू तक, या फिर ऐसा भी बहुत चांसेस है इंटरव्यू के बाद भी आपको फ्रीलांस का काम मिल जाए। करेक्ट? क्योंकि ये सब तो बहुत अच्छा ही स्किल्स है जो आप सीखे हो, लाइक फ्रंट एंड बैक एंड, ये सब तो दैट्स अ गुड थिंग, राइट? तो यू कैन गो फॉर दिस। मतलब बस, बट बात यह है कि आपको टिकना पड़ेगा, देन ओनली इट इज ओके, राइट? सो दैट्स इट।
या सो वी हैव वन मैसेज फ्रॉम विकास लाइक भैया फ्रीलांस कितना पे करता है, डिपेंड ऑन आपका एक्सपीरियंस और आपका क्लाइंट। तो उसी हिसाब से ले, जैसे डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के ऊपर और आपका एक्सपीरियंस कितना है, प्लस आज के डेट में तो ये लोग काम के हिसाब से दे रहे हैं। मतलब अगर काम में वो लोग मेजर करते हैं कि हाँ दिस इज हाउ मच फ्रीलांस गिग शुड गेट पेड काइंड ऑफ थिंग। तो डिपेंड करता है भाई, इट इज़ नॉट सेम एवरीवेयर एंड इट इज़ नॉट मतलब ऐसा कुछ रेंज नहीं है कि डिफ़ॉल्ट रेंज की हाँ इतना के अंदर ही होगा, कुछ भी हो सकता है। रिलेटेड टू क्लाइंट, क्लाइंट का बजट कितना रिलेटेड टू दैट, क्लाइंट का काम कैसा है रिलेटेड टू दैट एज वेल। सो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट। ओके। ओके 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 वी हैव वन मैसेज फ्रॉम विकास लाइक भैया आपका कितना है, लाइक अराउंड तो आप पर्सनल है तो सॉरी। नहीं नहीं, अभी जैसे अभी का जो क्लाइंट है वो अराउंड, मतलब अराउंड नहीं, उनका रेंज है आवरली बेसिस पर रहता है, दैट इज $7 टू $13 का, ठीक है। $60 से $13 पर आवर का है। और वो ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको $13 देगा या हर दिन 7 या 8 डॉलर देगा, ऐसा नहीं। काम के हिसाब से है, और 8 आवर से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते, राइट, इस तरीके से। तो क्योंकि उनका भी गवर्नमेंट रूल्स वगैरह रहता है, और उनके यहाँ गवर्नमेंट रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। कोई भी फॉरेन कंट्री का आप देख लो, इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। तो एंड इवन दो कोई फ्रीलांस क्लाइंट वो नहीं देना था, क्या बोलते हैं उसको, ओटी टाइप ऑफ थिंग, वो सब में दे आर नॉट मच इंक्लाइंड। एंड बाकी काम के ऊपर है, अगर आपका काम थोड़ा रहा हेक्टिक रहा, कि थोड़ा ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह रहे, या तो ज़्यादा कुछ डिमांड रहा क्लाइंट के साइड से और आपको डिलीवर करना हुआ, तो $13 टच कर जाता है पर आवरली बेसिस, ठीक है। और अगर काम थोड़ा चिल टाइप का रहा, इजी लॉजिक बेस्ड रहा, मतलब ठीक है हो जाएगा काइंड ऑफ थिंग, तो दैट इज गोज अराउंड, मतलब नॉट फुल्ली 7 बट 10, नॉट नॉट 9 इवन, मतलब 9.5 to 10 के आसपास रहता है। बट रेंज है 7 to 13, तो इस तरीके से, राइट। अभी का बोल रहा हूँ, अभी का। तो ठीक। ओके।
Any more doubts or anything you need to ask? Oh. पाई चार्ट का क्या था? पाई था शायद। Okay.
any more thing anybody can ask in my live stream? Okay, hey, hi Avik, welcome to live stream. Welcome to live stream. So, Avik has asked us a question. Avik has completed the basic SQL and familiar with the basic syntax. Congrats, Avik. Congrats. Good to see that. And sir, now what to do? So, see, once you are completed with the basics, now move to this website. Let me show you that data lemur. Go to this website, right? Go to this website and do all the easy questions first. ठीक है? Do all the easy questions. If possible, you can move to the medium level as well. मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जितना क्वेश्चंस है इसमें फ्री और पेड दोनों है. तो फ्री क्वेश्चंस जितना है वो आप बिना देखे ट्राई करो. ठीक है. और जितना कॉन्सेप्ट मतलब not feeling confident enough. No, no, I know you are confident. Don't worry. It is just an kind of, I mean, practice kind of thing. No need to worry about. Just I know. See, देखो पता है. I know one thing कि most of the people are afraid to go face this kind of challenges. No need to worry. It is not a test or it is not a, I would say, kind of demotivating kind of thing. Just go and do one easy question. At least do something. At least go start with the difficulty easy level. Data lemur का question बहुत easy रहता है. Let me tell you that. मतलब most easiest. Let me tell you. So go and do 1 2 questions, right? And side by side. That this is just for your practice. And side by side, what you should do? You should go and start learning the advanced SQL. Advanced SQL concepts में क्या क्या है? जॉइंस आएगा, एग्रीगेट फंक्शन, सीटी, विंडोज फंक्शन, ये सब रहता है. जैसे इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फिर सम, काउंट, एवरेज, मिन, मैक्स, इस टाइप का सब क्वेरीज और सीटी सेम थिंग. फिर विंडोज फंक्शन रहेगा, रो नंबर, रैंक, लीड, लैग, इस टाइप का. ठीक है. और केस वेन वाले स्टेटमेंट, ये सब ज़रूरी है. तो ये सब आप स्टार्ट करो सीखना. ठीक है. तो मतलब जस्ट मूव फॉरवर्ड और मेक श्योर करो कि वो क्वेश्चंस आप क्लियर आउट करो जो datalemma.com का है. देर आर मतलब मैं तो बोलूँ इजी क्वेश्चंस है. यू कैन गो विद दैट. और अगर कुछ लग रहा है कि हाँ थोड़ा डाउट है, डर लग रहा है, तो डू वन थिंग. गो विथ माई प्रोजेक्ट जो मैं सीक्वल प्रोजेक्ट दिया हूँ. और जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स मैंने दिया ना 1 से 12 का रिक्वायरमेंट्स, वो सब सेम चीज़ प्रैक्टिस करते रहो हर दिन. देखना डर हट जाएगा. तो इट इज़ नॉट लाइक दैट. डर तभी रहता है जब प्रैक्टिस नहीं रहता है. आई मीन सॉरी, डर तभी आता है जब कॉन्फिडेंस नहीं रहता है अपने में. और कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे. ठीक है. सो दैट्स द थिंग. तो रोज प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. फिर ये सब क्वेश्चंस करो, राइट. आप अभी इसलिए डर रहे हो, इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं हो क्योंकि आपको लग रहा है कि कहीं आप में कमी है. और कमी कैसे पूरा होगा? हर दिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तभी आपका कमी पूरा होगा, राइट. मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मैंने शायद मेरे को और इम्प्रूवमेंट चाहिए, राइट. और उसी में मालूम चलेगा कि आप कहाँ पे लैग लैग करते हो, कहाँ पे आप आगे बढ़े हो, राइट. तो इसलिए बोल रहा हूँ जस्ट टू टेस्ट योर सेल्फ, राइट. जस्ट टू टेस्ट योर सेल्फ. एंड इट विल बी अ प्राइवेट थिंग. मतलब आप अपना टेस्ट कर रहे हो, इट विल बी विथ यू. ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया को मालूम चलेगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस गलत है या तो ये कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा आपने गलत किया. ऐसा नहीं है. इट इज़ जस्ट फॉर यू. फेस दैट कॉन्सिक्वेंसेस. लेट मी टेल यू दैट. फेस इट. नहीं तो कल को इंटरव्यू में अगर आप यही अंडर कॉन्फिडेंट होके जाओगे, इट विल देन यू विल थिंक कि काश उस टाइम मैं प्रैक्टिस कर लेता तो
आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करो। और नो नीड टू वरी अबाउट, these are just questions, these are just simple question, nothing else, nothing will happen। अगर गलत भी होता है ना, वो सेम क्वेश्चन को आप 4 बार करोगे, 4 बार देख के भी करोगे और 5 बार बिना देखे करोगे उसके बाद, तो आपके माइंड में ऐसे ही सेट हो जाएगा, राइट। तो नो नीड टू वरी अबाउट, जस्ट प्रैक्टिस, डू दिस क्वेश्चंस एवरी डे। एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया तो आप अपने से देखना, खुद क्वेरी लिखना स्टार्ट कर दोगे अपने से, कुछ भी अगर खोजना होगा तो, राइट। तो नो नीड टू वरी अबाउट, जस्ट स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट, जस्ट फॉर फन ओनली स्टार्ट करो। अभी जैसे क्या है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ऑफ है, जस्ट एक बैठ जाओ सुबह उठ के कि हाँ एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है, जस्ट स्टार्ट इट, दैट्स इट, डोंट वरी। और डेटा लेमर के क्वेश्चंस इजी है, मतलब लीड कोड इफ यू गो, मैन दिस आर वेरी टफ, लेट मी टेल यू। मतलब लीड कोड क्वेश्चंस अगर मैं भी अभी बैठ जाऊं करने के लिए, तो मेरे को भी बहुत टाइम लगेगा, लेट मी टेल यू दैट। दैट टू मैं मीडियम लेवल का क्वेश्चंस बोल रहा हूँ लीड कोड का। तो ऐसा नहीं है कि सब परफेक्ट है, स्टिल आई विल लैग बिहाइंड इफ आई स्टार्ट डूइंग एनी कोडिंग क्वेश्चंस राइट नाउ। कोडिंग मतलब क्वेरी रिलेटेड क्वेश्चंस। सो एवरीवन इज इनटू लर्निंग स्टेज, no need to lose confidence, just start working, you will easily gain confidence with practice। so that's it। और बाकी डाउट्स पूछने के लिए आप, मैं तो हूँ ही ना, क्या क्या टेंशन है, क्या क्या चीज़ का टेंशन है, डाउट क्लियर करने के लिए आई एम देयर ना। तो डाउट्स होता है, जस्ट आस्क, दैट्स इट। और किसी को कुछ भी डाउट्स हो, आप क्लियर आउट करो, पूछो, ठीक है। जस्ट अ मिनट, गिव मी सम, join back again, just give me 5 minutes of time, right।
Um, Hi everyone, back on the live stream. Back on the live stream. Any doubts? Anything you need to ask? Okay, we have hi Nick. Welcome to live stream. Hi Nick. Welcome to लाइव स्ट्रीम सो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन पे एक वीडियो या श्योर बनाएंगे क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन पे क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे हम्म, मतलब सीक्वल को इस तरीके से लिखने को बोलते हैं जिसमें कि डेटाबेस जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे दे दैट्स इट तो मतलब अगर कोई भी आप कोड या क्वेरी 6-7 लाइन में लिखते हो और अगर वो 6-7 लाइन कम होके मतलब नॉट बाय चेंजिंग द लॉजिक बट जस्ट बाय चेंजिंग द आई मीन कॉन्सेप्ट्स दैट यू आर यूजिंग इन दैट मतलब अगर आप 6-7 कॉन्सेप्ट्स यूज करके आउटपुट निकाल रहे हो और वो सेम कॉन्सेप्ट सिर्फ चार सपोज 4 कॉन्सेप्ट्स लगा के वो सेम आउटपुट निकल जाए तो उसे ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं दैट्स इट और ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या है कि बस परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और प्रोसेसिंग टाइम कम करता है दैट्स इट ठीक है एक वीडियो बनाते हैं इस पे बट द थिंग इज कि आप लोग उतना समझ इसलिए नहीं पाओगे बिकॉज देखो हमारे पास उतना बड़ा भी टेबल नहीं है कि जैसे लाखों का रोज का टेबल उसमें आपको एक समझ में आएगा कि लाखों रोज का टेबल रहेगा तो उसमें अगर क्वेरी लिखूं तो जैसे 5 सेकंड लगेगा आउटपुट आने में और सेम आउटपुट के लिए अगर मैं डिफरेंट लॉजिक यूज करूं या तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज करूं और वो 5 सेकंड की जगह 2 सेकंड में मुझे आउटपुट दे तो वही होगा क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन राइट तो उसके लिए क्वेरी बहुत बड़ा चाहिए मतलब एटलीस्ट लाखों रोज का क्वेरी चाहिए तब जाके ही होगा नहीं तो क्योंकि छोटे रोज में आई मीन कम रोज में काम करने में आप देखोगे कि दोनों ही मिली सेकेंड्स में आंसर पहुंचा देता है मतलब आउटपुट दे देता है तो इसीलिए ठीक है बनाते हैं एक करते हैं एक्सपेरिमेंट और बनाते हैं इसमें राइट बाकी और किसी को कुछ डाउट्स पूछना हो या तो किसी को कुछ फीडबैक देना हो तो आप दे सकते हो फीडबैक या डाउट कुछ पूछना हो आप लोग पूछ सकते हो राइट
Like, how do you generally approach a SQL? We have one live chat from Nick. How do you generally approach SQL problem like I'm not able to figure out where to use subqueries? The subqueries, these are nothing, मतलब query के अंदर जो query रहता है that's it. और मतलब सब क्वेरीज रिलेटेड टू, देखो, ओके मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ मेरा अप्रोच क्या रहता है। कुछ अगर मैं जब स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज लर्निंग सीक्वल फ्रॉम दैट टाइम आई एम सेइंग लाइक व्हेन आई यूज्ड टू सी अ सीक्वल क्वेश्चन like especially especially deciding whether to use subquery, I follow the thought process, right? First thing, first one thing that comes to your mind is thought process, right? Why I'm saying this, I will say in stepwise. Like, first understand the question. Like, before touching SQL, I make sure I know exactly what the final result should look like column, filter, grouping, like this kind of thing, right? This is the first thing that I make sure by looking the question, like, yeah, this is what I have to find out, right? Second thing, check if the, I would say, queries can be done in one pass. One pass मतलब one go. मतलब क्या है? There are lots and lots of problems that can be solved with joins, group by, where, having kind of things, and without you needing a subquery, right? And if it feels like you are calculating something first and then using that result again to filter or join, that's when a subquery is useful, right? I hope you are understanding. Let me tell that line once again. If you feel like you are calculating something first and then using that result again to filter or join, that's when a subquery is useful. एंड सब क्वेरी का ज़्यादा यूज केस कहाँ रहता है? लाइक व्हेन, इफ यू आस्क मी and I will say you from my experience, then I would say I use subqueries when filtering based on aggregated result, right? Aggregated result मतलब sum का हो गया, average का हो गया, max का हो गया, वो सब aggregation बोलते हैं, right? देन कंपेयरिंग टू अ डिराइव्ड वैल्यू, मतलब एक वैल्यू है अपने पास, उसके साथ अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो, राइट? और फिर ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू रीयूजेबल चंक काइंड ऑफ थिंग, दैट्स लिव इट, दैट्स थर्ड पॉइंट वैलिड नहीं होता है, मेरे को तो बोल रहा हूँ, बट लेकिन दो चीज़ मैं सब क्वेरी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, राइट? कहाँ पे? फिल्टरिंग, जहाँ पे ऐसा फिल्टर का जरूरत होता है जैसे एग्रीगेटेड रिजल्ट, फिल्टरिंग बेस्ड ऑन एन एग्रीगेटेड रिजल्ट, एट दैट टाइम आई यूज सब क्वेरी. Second thing, when I compare to a derived value, like any derived value I have, suppose I have the minimum age of an employee, उसके साथ अगर मेरे को सारे एम्प्लॉयज के साथ कंपेयर करना है, दैट इज लाइक कंपेयरिंग विद अ derived value, at that time I use subquery, right? And last point, you make sure you optimize all the things at the end, means first get the correct answer using whatever works, then check with explain, like if it shows, and try to optimize, maybe replace subquery with join or add indexes, correct? So it is like that, means it is not that necessary you have to use subquery. If you are getting the output with the use of joins or without using subquery, let me tell you, then good to go. लेट मी टेल यू दैट, और सब क्वेरी हमेशा देखना, इफ़ यू आस्क मी फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, हमेशा एग्रीगेटेड वैल्यूज में ही यूज होता है, सो दैट्स द थिंग, राइट? एंड एनी मोर थिंग anybody need to ask? Hey, hi, Solo Reflex, welcome to live stream. Welcome to live stream. And hello, yeah, hello, hi, Solo Reflex. Like, भैया, I have one more thing to learn. Yeah, okay, sure. आपने PP structure V3 का देखा, and Selenium in Python क्या है? देखो, PP structure तो पैडल पैडल स्ट्रक्चर है, राइट? उसका
जो है, जो आपने पूछा था उसका मैंने ऐसे देखा नहीं, बट सेलेनियम का मुझे आइडिया पता चला। मैं अपने फ्रेंड से पूछा था इसके बारे में, तो पीपी स्ट्रक्चर का उसने मुझे कुछ ऐसा आइडिया दिया नहीं, बट सेलेनियम का उसने आइडिया दिया कि सेलेनियम क्या है, एक ब्राउज़र ऑटोमेशन टूल है, उसने ये बोला है। और बाकी एक चीज़ उसने बोला था कि पाइथन में वो क्या होता है, लाइक यू कैन यूज़ इट टू कंट्रोल ब्राउज़र्स लाइक क्रोम एंड फायरफॉक्स। ठीक है, तो वो बोल रहा था कि जो उसका शैडो टीम है, मतलब ही इज़ अ डेटा एनालिस्ट इन अमेज़न, तो उसका जो मतलब क्या रहता है, देखो जब डेटा एनालिस्ट सारे काम कर लेते हैं, उनका एक शैडो टीम रहता है चेक करने के लिए, काइंड ऑफ। तो वो क्या करते हैं, वो लोग सेलेनियम यूज़ करते हैं, मतलब कि जो कोड्स लॉन्च होने से पहले वो लोग सारे ब्राउज़र्स में टेस्ट करेंगे, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, इस टाइप का। तो मतलब सेलेनियम उसने एक चीज़ बोला, मतलब वो यूज़ नहीं करता, उसके जो शैडो टीम है दे यूज़ दैट, और वो उसको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट उसने जितना इन्फॉर्मेशन दिया मतलब इंडस्ट्री लेवल का, उसने ये बोला कि सेलेनियम है आपका ब्राउज़र ऑटोमेशन टूल टाइप का है। और पाइथन में क्या करता है, यू कैन कंट्रोल दैट ब्राउज़र लाइक क्रोम और फायरफॉक्स, प्रोग्रामेटिकली आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। और ज़्यादातर उसने बोला कि वो टेस्टिंग वेबसाइट्स के लिए ही काम आता है, मतलब टेस्टिंग के लिए, मतलब जो भी वो कोड लिखता है उसको लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग में पहले डालना पड़ता है, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि कस्टमर यूजेस या कस्टमर फीडबैक खराब है। मतलब सपोज अगर कोई आपने कुछ प्रोग्राम या ऐप बनाया और आपने टेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट उसको लॉन्च कर दिया, और कस्टमर, चलो कस्टमर का क्या है, वो तो डाउनलोड कर लेगा अपने मोबाइल में, और उनको वहाँ पे कुछ बग मिला या वहाँ पे उनको कुछ इशू हुआ, तो बोलते हैं ना कि मतलब कस्टमर फीडबैक गलत आता है, वो लोग फीडबैक लिखते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो उससे बचने के लिए वो लोग पहले टेस्ट करते हैं। तो वैसे ही वो एक तरीके का मतलब टेस्टिंग वेबसाइट है जो ऑटोमेटिकली टेस्ट करता है। ऐसे क्या क्या टेस्ट होता है पता है उसके टाइम में, वो बोल रहा था जैसे क्लिकिंग बटन ऑटोमेटिक टाइप का, फिर नेविगेशन पेज विदाउट डूइंग इट मैनुअली, मतलब पूरा ऑटोमेशन में वो टेस्ट होता है, बैकएंड में टेस्ट होता है। तो उसने ये बोला था सेलेनियम के बारे में। और पीपी स्ट्रक्चर जो है वो मैंने पूछा था, उसको आइडिया नहीं था उसके बारे में, और मैंने भी उतना खोजा नहीं, लेट मी टेल यू दैट, बट इतना मुझे मालूम था कुछ पीडीएफ रिलेटेड का काम रहता है उसका। देखता हूँ क्या है उसको। ठीक है, आ, मैं उसको एक बार चेक करके बोलता हूँ क्या चीज़ है। मेरे को सेलेनियम का आइडिया था, तो वो आई हैव नॉलेज फॉर दैट, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल नॉलेज है मेरे फ्रेंड्स के पास, लाइक फ्रेंड्स तो नहीं बट फ्रेंड्स के जो शैडो टीम है उनके पास है, तो दैट्स इट। तो वही है सेलेनियम का। पीपीवी3 का देखना पड़ेगा मेरे को, मतलब उसका आइडिया नहीं है मेरे पास उतना, लेट मी टेल यू। Okay, we have one more live chat, like control all files and other all coding context file, right, in browser in backend का बोल सकते हो। मतलब सेलेनियम से क्या है, आप ऑलमोस्ट कंट्रोल कर सकते हो सब कुछ ब्राउजर में थ्रू पाइथन। मतलब जैसे बोथ आप बोथ इन फ्रंट एंड और बाकी कुछ अगर ट्रिगर एक्शन करना हो बैकएंड में तो हो सकता है। मतलब सर्वर रिक्वेस्ट भेज के आप बैकएंड में ट्रिगर रिक्वेस्ट, मतलब सॉरी ट्रिगर एक्शन को दे सकते हो, मतलब इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हो उसमें, ठीक। और बाकी फ्रंट एंड में तो यू कैन यूज इट सेलेनियम, इतना पता है, क्योंकि मेरे को जितना मालूम है जब मैं काम कर रहा था तब इनका जो शैडो टीम था दे आर मोस्टली इनटू ऑल दिस थिंग्स। तो बट उतना डीप डाइव नॉलेज नहीं था, पर इतना मालूम था लोग कुछ टेस्टिंग करता है। तो अभी जब मालूम चला तो आई केम टू नो कि अच्छा वो सेलेनियम के थ्रू करते हैं, राइट। तो मतलब ज़्यादातर क्या है, वर्क विथ मल्टीपल टैब्स काइंड ऑफ थिंग, फिर पॉपअप वगैरह आता है वो सबको हैंडल करना, ये सब सेलेनियम कंट्रोल करता है, राइट। जैसे देखना आप जब अमेजन में कुछ अ, खरीदते होगे तो आप एक्चुअली मल्टीपल टैब्स खोलते होगे, कि एक जगह आप देखो सामान का और एक जगह आपका जितना भी सामान आप कार्ट में डालते हो उसके कार्ट में, तो उसका एक अगर आप अलग टैब खोलते हो तो वो टेस्टिंग होता है बैकएंड में। तो वो सब क्या है, वर्क विथ मल्टीपल टैब्स एंड विंडोज, राइट। तो दैट्स द थिंग। और बाकी पॉपअप वगैरह, पॉपअप तो वैसे आता नहीं है फिलहाल, हाँ अगर आप
पॉपअप तो मैंने आज तक देखा नहीं है रिलेटेड टू अमेजन का वेबसाइट, बट इतना देखा हूँ कि अदर वेबसाइट्स में जैसे कि कुछ रिलेटेड टू सम वेबसाइट्स जिसमें कि पॉपअप वगैरह आते रहता है, नाम याद नहीं आ रहा। जैसे इसका एप्पल म्यूजिक का मेरे को एक बार याद था कि मैं जब सब्सक्रिप्शन ख़त्म हुआ था तो उस टाइम वो पॉपअप एक बार आ जाता है, मतलब गाना अगर आप पूरा चलाने जाओ तो एक पॉपअप आ जाता है ऑटोमेटिक। तो वो सब सेलेनियम के थ्रू कंट्रोल होता है, मतलब टेस्टिंग होता है और कंट्रोल भी होता है, राइट? तो दैट्स द थिंग। एंड ओके, वी हैव वन मोर लाइव चैट, लाइक हाँ हाँ राइट, कॉल जाता है बैकएंड से थ्रू यूजिंग, हाँ बट द थिंग इज राइट, यू टोल्ड इट राइट, वो पाइथन से ही होता है, मतलब एवरीथिंग फ्रॉम पाइथन, दैट्स द थिंग, राइट? So, hey, hi, new viewer. Like some facts. Welcome to live stream. Some facts. Welcome to live stream. Hello, bro. Yeah, hello. How are you? Hello, brother. How are you? So, anything, anybody need to ask any doubts? They can ask here in the live stream. Any doubts you can ask in the live stream. Any doubts? Yeah, okay, so we have one more live chat. Like, bro, I am in third year and I want to pursue my MS, okay, in quant field. So, what do you think about, right? Quant field, since you are in third year, I would say you should spend at least next 1 to 1.5 year building the foundation in mathematics, right? I hope you are doing all that. Mathematics related to like linear algebra, calculus kind of thing. Because one of my cousin is doing that. That's why I'm saying. And pursuing an MS in quant field is a, I would say it's a good choice. मतलब globally in demand roles है, and what things or skills are used in that? Maths, programming, finance, and data science. These all things are used in quant field, right? So maths में, as I've told you, linear algebra, calculus, these are what my cousin used to study. And programming, Python, SQL, that's the, I would say, bread and butter. Finance basis में my cousin used to always, he was mostly into like portfolio theory kind of things. वो कुछ होता है शायद फाइनेंस बेसिस में, कोई उतना आइडिया नहीं है in that thing. तो I would say you should aim to create a project first thing, मतलब related to finance, because lots of maths is required. And once you make some projects related to finance related projects, you might gain some, I mean, internship kind of thing, that I know, because he had made all the things and he had gained an internship in Deloitte. Matlab, via college he gained an internship. He got an internship, right? So in Deloitte he have got an internship, 6 months ka internship tha. So yes, it's a good, I would say, high paying kind of skills and globally in demand. But the thing is ki in this, you might be knowing better than me, like maths, programming, finance, data science, ये सब का बहुत ज़रूरत है. So if you are willing to do that, then you can, yeah.
go for it, go for it. But let me tell you, if this thing is interesting to you, then you can go, because the syllabus is huge, and it is, yeah, kind of tough. But if the things interest you, then only you can do, right? So that's it. And project, as I've told you, do some project, because internship and recommendation can come from there. Okay, we have one more live chat. Like, and which project can I do in third year student? As a third year student in data science domain. Data science domain के through related to quant, that. But let me tell you what my cousin has done. My cousin has done this, मतलब uh, ये जो pricing prediction, what we say. Mm, what was that? I forgot. Stock price prediction. My cousin has done that project actually. Stock price prediction. ठीक है ना? उसमें what he had done, मतलब जो historical data है, that he had used to just forecast all those prices and all. So he had done that project, stock price prediction project. So if you want, you can do that. And related to other project, I have no idea. Let me tell you, because that is a different field. And why I was able to tell you about this project, because this my cousin has done, like stock price prediction project, something like that. And he has used all the historical data kind of thing. Like, how I can tell you, because uh, like he was checking all the information in my PC, like at that time. That's why I have a idea like what he was doing and related to the project. So at that time, these things was going on. So that's why I would, like, I am able to help you right now. So stock price prediction project, you can do it, right? My cousin has done it. So I think from his feedback, I can tell you, yeah, you can also do it, because he had got an internship in Deloitte. So I think that project was useful for that. And also he had done something related to fraud detection का project he had done in his advanced, मतलब he had done two projects, what I know, during his vacation time का मेरे को जितना याद है. He had done one more project, like fraud detection project in transaction. He had done that. So you can do that as well. मतलब क्या रहता है कि फाइनेंशियल डेटा सेट से ही यूज टू फाइंड आउट कि कहाँ पे क्या, मतलब फ्रॉड हुआ है थ्रू सम टेक्निक्स, लाइक वॉट एवर, मतलब फॉर्मूला ही यूज टू नो, फ्रॉम देयर ही वुड फाइंड आउट, बिकॉज इसमें फाइनेंस का भी ज़रूरत है. सो फ्रॉड डिटेक्शन का ही हैड डन वन प्रोजेक्ट, एंड स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन ही हैड डन वन प्रोजेक्ट. So if you ask me related to this, I can say, yeah, these two projects you can also do, right? And बाकी he was mainly focused on documentation. मतलब whatever project he has done na, he had given more time on good documentation, right? And that's it. I think you should mainly follow project plus documentation, because he had told me like he had given like lots and lots of time for like purifying this documentation. Let me tell you that. So do it, do it. Okay, we have one live chat from Nick. Did he use clustering in fraud detection? No idea. I have no idea. I know just I know those topics, because I am not that much into finance field and all that. Let me tell you. So I have no idea in that. I just know the topic. Why I know the topic? Because during his vacation time, he had visited, like, we all go to our hometown, right? So at that time, what happened? He was using my uh, PC at that time. Computer use कर रहा था. So that time I was also seeing कि भाई what he is learning and what he is doing and all that thing. So from there I remember, I have not much idea related to that. मतलब fraud detection का word याद आ गया, so I told. Project related था, and he was taking care of documentation, but what was inside it, uh, sorry यार, वो तो idea नहीं है मेरे को, right? Because it was his project. और बाकी, yeah, that's it, that's it.
And any more thing anyone can ask. Like whatever help I can do, I can help you out, right? But matlab, see, the thing is, I came to know all about this from my cousin, so from there I can help you out. But related to deep dive of all those projects, I was not having that much knowledge about it. Let me tell you. So actually, that is all finance kind of thing he was taking care of. So that's why that's the thing. And anything else anybody need to ask in my live stream? Okay, so we have already 20 votes. Oops, 20 votes in our मतलब quiz. And 1 hour भी हो गया. So let's close this and see let's what the correct answer is. Let's end the poll. And yes, maximum of you have given the actually correct answer जो कि है count A1 to A2. Correct answer. And main thing is what I can see is like most of you people Excel is, I would say that's on top notch because Excel ka grip what I am seeing most of you matlab majority of you those who are joining my live stream their Excel is like good to go. I would say on top notch field I would say. So that's a good thing. At least in today's world people are much more aware related to the technical tools. So that's it. And okay, some facts. We have one more live chat. Which things are necessary to do to get an internship in good form? Let me tell you that he was taking care of project and good documentation. Means after project na, he made very good documentation and he was refining the documents like anything. Malab, he was just refining it like I would say what to tell you means if you read his document na, you will feel ki my god some experience kind of guy has written that document. Matlab, he had refined the document like anything, and then from college he had got a placement in Deloitte. So that's the thing. From college he has got a placement. Actually, he had not. No, sorry, not placement. I mean internship, not placement. And after that he went to HSBC. Matlab, after internship he got a placement in HSBC Bank. So Deloitte में internship he got from college and also placement भी college से ही मिला. And if you ask me, then what I have seen, he was mostly focused on project and documentation, right? So yeah, you can also follow that. I would say good projects and documentation, right? So let's start with a new question. Let me write this question here. Which Excel function return the position of a substring within a text? Substring within a text. Let me write this. Let me write the options. Which Excel function return the position substring? Search, find both A and B. Wait. Okay, I have given four options and let's start the poll. So the question is which Excel function returns the position of a substring within a text? So there are four options. As usual, I give four options right now so that you would be able to think related to the options by seeing the options. That is search, find, both A and B or mid, right? So these are the things. If you can participate in this, it will be a good thing, right? So please participate in this. And let me tell you, it is a, I mean, good question. Let me tell you that. So anything you need to ask,
Any doubts? Anybody just ask in this live stream. I'm ready to help each and everyone, right? Any doubts? Any doubts? Just let me just change the option. Any doubts? Yeah, okay. Hi Prakash, welcome to live stream. Hi Prakash, welcome to live stream. Welcome to live stream. Yeah. So we have one live chat from Prakash. Like I am learning Python and Power BI. My current job is in supply chain. Hey, nice, yaar. I was also in supply chain management, right? Which company? Supply chain analyst. And should I go for data analyst? Uh, should I go for data analyst as I have limited resource here in the current company? In which company you are working? See, right now, okay, some facts. Okay, Prakash, I am coming to you. Some facts, I am just giving the answer for this. Like in which company you are working right now? Right now, I am not working in any company. I am just working for a freelance client and also helping, like taking care of my YouTube channel, right? Earlier, if you ask me, supply chain management companies, like लास्ट कंपनी वाज amazon, उसके पहले फ्लिपकार्ट एंड फर्स्ट कंपनी वाज हिंडाल्को, राइट? सो इट इज लाइक दैट. Okay, we have received one message like TVS supply chain solution. Yeah, that's a good company, bro. TVS supply chain अच्छा है. That's a good one. Supply chain analyst, should I go for data analyst? Yeah, you can like if you have experience in that, even though supply chain and logistics are in high demand, let me tell you, because I am also having that background, like pure warehouse supply chain wala kaam. I have experience in that, and that too, like it is an interesting thing, like you might be knowing related to it. And since you are already working as a supply chain analyst and learning Python and Power BI, I would say transition to a data analyst role is a good move. If you want, if it is interesting to you, you can do that, right? Why I am saying you can use that, जो supply chain का जो domain knowledge है ना प्रकाश, जो सप्लाई चेन का डोमेन नॉलेज है वो हेल्प कर सकता है. मतलब जैसे टेक्निकल स्किल्स में आप इजीली उसको ग्रैब कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आपको ही पता होगा सप्लाई चेन में पूरा नंबर्स का गेम है. पूरा इनबाउंड आउटबाउंड इन्वेंट्री रिटर्न सेंटर, लाइक आई वाज इनटू इन्वेंट्री एंड रिटर्न सेंटर. तो वहाँ पे तो लाइक क्या बोलूँ, मतलब लॉट्स ऑफ डेटा वी हैव टू हैंडल बिकॉज आउटबाउंड से ऑल्सो वी आर कनेक्टेड, राइट? सो दैट्स द थिंग. और पूरा डेटा फोकस काम रहता है, लेट मी टेल यू. सो यू हैव ऑल्सो अ गुड एक्सपीरियंस इन डेटा फोकस वर्क. सो यू कैन डू वन थिंग. You can like go and switch your role to data analyst role, right? And also look for roles where analytics is the core responsibility. If I mean to say, जैसे कि सप्लाई चेन डेटा एनालिस्ट जो है वैसे भी रोल्स रहता है. फिर रिलेटेड टू हमारे कंपनी में अमेजन में क्या था, एफ बी एनालिस्ट भी था, मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजन डेटा एनालिस्ट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? तो एनालिस्ट विल बी देयर, बट एज पर सप्लाई चेन का अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज रहता है, और डिपेंड ऑन द कंपनी, डिपेंड ऑन द बैकग्राउंड, ठीक है? एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस एक्सपीरियंस विल गिव यू रियली स्ट्रोंगर, I mean stronger grip and accelerate your learning. Also, let me tell you, this will open future path into advanced field like business intelligence, क्योंकि आप BI भी कर रहे हो, राइट? तो आप BI डेवलपर में भी जा सकते हो. तो बिजनेस इंटेलिजेंस रोल में भी यू कैन अप्लाई. सो या इफ यू वांट, एंड इफ this Python and Power BI is creating a interest in you and you are curious related to it, so yeah, you can go it, right? So anything you need to ask? Okay, we have one message like RTO inventory, even financial inbound, outbound, CN, CF. Yeah, correct, correct. RTO एनालिसिस डैशबोर्ड तो आप लोग बहुत करते होगे फिर, राइट? मतलब जैसे कि रिटर्न्स का हो गया, हम लोग जब फ्लिपकार्ट में थे वी यूज्ड टू डू दैट.
मतलब रिलेटेड टू रिटर्न्स एंड मतलब हाई रिस्क ऑर्डर जो रहता है ना, वी यूज टू प्रेडिक्ट दैट, करेक्ट। सो दैट वाज द थिंग। और बाकी इन्वेंट्री का तो मतलब स्टॉक नीड, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, ये सब तो भाई मतलब दैट वाज अ कोर, लाइक आई कैन कनेक्ट यू राइट नाउ प्रकाश, लाइक आई होप यू कैन आल्सो कनेक्ट मी रिलेटेड टू दिस। कनेक्ट में मतलब थॉट प्रोसेस यू कैन कनेक्ट। तो ये सब चीज़ तो है। मतलब और बाकी पिक पैक डिस्पैच तो आपका ये मेन चीज़ होगा शायद, आप लोग का पिक पैक डिस्पैच आउटबाउंड का। तो वो भी हम लोग किए थे सीक्वल में, मतलब टाइम एंड डिटेक्ट डिलेस कहाँ पे हो रहा है, मतलब कहाँ पे डिले हो रहा है, कहाँ पे, मतलब ये सब कुछ हम लोग चेक करते थे इन फ्लिपकार्ट व्हेन आई वाज इन फ्लिपकार्ट। So yes, you can use these things as your project as well. So you have lots of, I mean, good experience, brother. You can continue your job and start preparing for all this Python and BI, and then just switch it. No issue, no issue. You have good experience, brother. Like I am also from that background only, so I can have a idea. Like yes, you can do it. So go for it, go for it. So any more thing you can ask? Any more thing you need to ask? Okay, we have hi Tejeshwar. Welcome to live stream. Hi Tejeshwar. Welcome to live stream. Welcome to live stream. Like I had passed my BSc IT this year as a fresher. I am not able to get any data analyst call. I know Power BI, SQL and Python. See, like I don't know how is your portfolio right now, but if you are having more than five, let me say more than 10 projects, then it is good to go, and that 10 projects should be available in the online platform. I mean to say, you should be having a LinkedIn ID, and all those projects should be there in your LinkedIn post. Why I am saying? Because your project should have an online visibility in today's world. No doubt you are sending CVs to recruiters and all, but let me tell you, most of the recruiters, they are highly active on LinkedIn, right? So when you showcase your projects in LinkedIn using a proper post kind of thing related to problem statement of the project, related to the solution of the problem statement. Like let me take a deep dive into it. Problem statement matlab whatever issues you have faced during the project, whatever hurdles you have faced, you have to write that in problem statement, and in solution you have to write those things, like what was your approach, what was the concept used, what was the tools you have used, right? This all things comes in solution. And what was the logic you were thinking, like we should use to get the output, but at last you found out that no, we have to use a different logic. Means I would say ना कि जो ऑन ऑन टाइम जो एक्सपीरियंस रहता है रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, यू राइट दैट इन सॉल्यूशन, एंड आल्सो problem statement related to that project, right? And also make sure you use proper keywords, like data hashtag data analysis, hashtag this hashtag data analysis, hashtag SQL, hashtag Python. So you can go in that. Like why I'm saying, because recruiters as well as freelance client, they see simple thing, they don't know you, no, even you don't know them, but how you both can connect? Via keywords. Like they will search hashtag SQL. What will happen in hashtag SQL search in LinkedIn? All the post related to hashtag SQL will come. Either it is vacancy post, either it is project post, it will show in front of them. So in this way what will happen, Tejeshwar, your project will showcase in front of the recruiter, and once they go to your post and then they see ki acha this was the problem statement and this was the like this is how Tejeshwar approached the problem statement. So in this way they will be able to know what skills you have, what concept you have used, what logic you have built,
And in this way, what will happen, they will get to know ki acha, for this vacancy, this candidate is having proper skills, let's connect, or let's ask him or her for the CV. So in this way, you will be able to get a good connection of recruiters, right? This is the first good thing related to posting your projects in LinkedIn. Second good thing, you know what, there will be lots and lots of people like you in LinkedIn who are fresher, or those who want to change their department or do a career switch in data analytics. So they will be also doing project, they will be also showcasing their project in LinkedIn. So in this way, what will happen, they will also will come to know about you. In this way, your LinkedIn connection will be having a lots of data scientists, data analyst, like this kind of people. What will happen in this, in this, you will be able to share your project, they will be sharing your project, they will be sharing their thought process, their logic, you will be also doing the same. And also, in this way, if some of the candidate in LinkedIn, suppose he or she is in data analyst post in some company and they get a reference, they will obviously can connect to you and give you a reference. So in this way, it is like posting your project in LinkedIn will be a very fruitful kind of thing. Recruiters can also be able to know about you, even though the candidates or the people who are working like you well, in data analytics field, they will be also able to know about you, right? So just make sure you are showcasing your project in LinkedIn. So that's the main thing. Do that and see what output do you get, right? Prakash Kumar, yes. Okay, Prakash Kumar, yes, I am going for my Python coaching in Coursera. I have subscribed you, bro. Welcome back. Yeah, sure, sure. Why not? I have my mail ID as well. You can ask me any doubts in your mail ID. Suppose you are writing any queries or codes and you get a error, suppose, and it is tough for you to figure out like what the error is all about or why I'm getting this error. So in this way, you can take the screenshot and ask me in the mail ID. I will be able to help you, and we are doing live stream each and every day. Hey, hi Arbaz, welcome to live stream. Hi Arbaz, welcome to live stream. Just a minute. Welcome to live stream. So we have message from Arbaz. Like, bro, I want to become a SQL master. How you can see if you are see Arbaz, like if you able to give around 3 months of your time. 3 months means 1 hour per day of your time in SQL, then let me tell you, you will be able to crack startup companies ka interview. Let me tell you that, Arbas, right? And if you can able to give 6 months for a 1 hour practice each and every day, consistent practice, then this mid-level and top-level MNCs plus FANG can also hire you. Let me tell you that. Mostly fang companies are into 1+ year of experience, but sometimes you know what happened, they hire you on a contractual basis, like 1 year ka contract. At least at that time you can gain a industry level of experience, and that time freshers are also get hired in on a contractual role. So what you will do in this 3 months, first 3 months, if you are like interested in mastering your SQL, फर्स्ट लाइक मास्टर द कोर सिंटेक्स. कोर सिंटेक्स मतलब क्या क्या चीज़, सिलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग. फिर जॉइंस, जॉइंस में क्या क्या रहेगा, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, दिस थिंग, मतलब अंडरस्टैंड देयर लॉजिक वेरी डीपली, राइट. एंड देन सब क्वेरीज, सब क्वेरीज प्लस एग्रीगेट फंक्शन जैसे कि काउंट, सम, एवरेज. ठीक है ना. तो ये सब से क्या होगा कि एटलीस्ट यू विल गेट कॉन्फिडेंस, मतलब दिस थिंग्स. उसके बाद क्या होगा, जब when you will be able to get this good grip in this for 1 month, move to second part, that is windows function, ct, which is also kind of subquery, ct, then case statement, string, date, math function. This is your second month task, right? So
जब आपका फर्स्ट मंथ का जो टास्क है उसका जब ग्रिप अच्छा हो जाएगा, आपका पूरा लॉजिक बिल्डअप होगा, गो टू सेकेंड मंथ and then you can have a, I would say, good confidence in that, and then start applying for the companies with projects, so you will be able to gain, I mean to say, a good exposure in data analytics field, correct? Because in SQL I would say you should do a lots and lots of project, then only you will be able, means recruiters will be able to see कि अच्छा this guy has done this much project, why not to take an interview of this, मतलब by the variety of projects, I mean to say. Okay, we have one message from Tejeshwar and Arbaz both. Tejeshwar, yeah, thank you for your guidance. Yeah, welcome brother, welcome brother. Arbaz, like actually sir, I want to become Java developer recently. I am in third year. Okay, actually I've asked for SQL mastering now, so that's why. So Java developer, I would say better to take care of basic Java mastery. Just like Python, we have the same thing like variable, data types, ये सब चीज़, if loop switch, Java में take care of that, list, set, map, queries, these are the main things you have to take care in Java, which will take you around 1 to 2 months to take care, मतलब to build up a good logic and concepts. And after this, I know one thing in advanced Java, it is like मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है? लाइक डेटाबेस कनेक्टिविटी, फिर स्ट्रीम एपीआई, लैम्डा एक्सप्रेशन, फंक्शनल इंटरफेस, एनोटेशन, रिफ्लेक्शन एपीआई, दिस आर द एडवांस जावा थिंग्स, सो मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस टॉपिक्स फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। फर्स्ट 2 मंथ आपको क्या करना है जावा में, जैसे कि आप जैसे वेरिएबल डेटा टाइप्स, if लूप, मतलब जैसे पाइथन में रहता है वेरिएबल डेटा टाइप्स, if लूप, देन एरेज, उसके बाद लिस्ट, ये सब चीज को आप बेसिक्स आप कवर कर लो फर्स्ट 2 मंथ्स में, ठीक है, जावा के लिए। और एडवांस में जैसे कि मैंने बोला डेटाबेस कनेक्टिविटी का ध्यान दो, देन स्ट्रीम एपीआई, लैम्डा एक्सप्रेशन, फिर एनोटेशंस, देन उसके बाद ये एक डिज़ाइन पैटर्न्स करके भी है जिसमें कि ऑब्जर्वर, सिंगलटन, ये सब चीज़ यूज़ होता है, सो मेक श्योर यू डू दैट, राइट? उसके बाद फिर मेक श्योर you are doing projects in that, because as you are in third year of college, so most of the uh, इसमें क्या बोलते हैं, most of the recruiters will ask you for the project, because as you are in third year, तो third year में क्या है कि mainly they will see about your projects only, so you go for that. Yeah, this is what I can help you in, correct? If you have any more doubts, I can help you out, right? Okay, we have one more question. I want ask like only SQL sir, for Java में कितना enough है? SQL Java, you don't need to be expert level in that. मतलब you must be comfortable with core concepts जो कि backend में काम आता है SQL में, जैसे कि मतलब वही normal select, where, group by, having joins, combining table, only this thing is required for SQL knowledge अगर आप Java के थ्रू जा रहे हो, because SQL क्या है वो backend में आ जाएगा। इफ यू आर लर्निंग जावा ना, तो सीक्वल क्या है वो बैकएंड में आ जाएगा, ठीक है, मतलब बैकएंड वर्क के लिए आ जाएगा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यू शुड हैव अ नॉलेज इन दिस, मतलब किस में पता है, डेटाबेस कनेक्टिविटी का, जैसे JDBC एक है, फिर परफॉर्म क्रूड ऑपरेशन, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हम लोग यूज करते हैं ना टू प्रिवेंट सीक्वल इंजेक्शन, use that thing, right? So this level of SQL is more than enough for most Java developer roles until you aim to become a database specialist. अगर आपको database specialist बनना है, then yeah, SQL is much more necessary, let me tell you. But अगर आप जैसे बोले कि Java developer बनना है, तो SQL का बहुत मतलब एक्सपर्ट लेवल भी नहीं चाहिए, मतलब बेसिक्स लेवल में मोर देन एनफ है, क्योंकि वो बैकएंड का ही काम आता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। बट स्टिल अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक जानकारी लेना है कि आपको कुछ मतलब आपको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाना है जावा के थ्रू, देन यू कैन से दैट,
आई कैन एबल टू हेल्प यू आउट इन दिस, ठीक है। अब ऐसा अगर पूछना है तो यू कैन आस्क मी। बट अगर जावा डेवलपर बनना है ब्रदर तो मैं तो बोलूँगा कम ही रिक्वायरमेंट चाहिए सीक्वल का, राइट। तो इट इज़ लाइक दैट। हाँ स्टिल, एनी मोर डाउट्स, एनी मोर स्पेसिफिक डाउट्स अगर पूछना चाहो तो आप पूछो। एनी वन, राइट, एनी डाउट्स एनी वन नीड टू आस्क, आप पूछ सकते हो। एनी वन नीड टू आस्क। ओके या वी हैव टू लाइव चैट, मतलब जावा प्लस स्प्रिंग बोट राइट पाथ है क्या, प्लस हाइबरनेट, या इतना पता है कि या जावा प्लस स्प्रिंग बोट प्लस हाइबरनेट क्या है, राइट पाथ है इफ यू वांट टू बिकम अ मॉडर्न बैकएंड डेवलपर, मतलब आज के डेट में सब काम आता है बैकएंड में। आई थिंक दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग कि सीक्वल का कितना ज़रूरत है, राइट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। तो स्प्रिंग बोट का क्या है कि वो मतलब बहुत फास्ट प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनाता है। सो मतलब क्या है कि इट क्रिएट्स प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन, और हाइबरनेट क्या करता है, वो हैंडल करता है, मतलब इट हैंडल्स द डेटाबेस ऑपरेशन एफिशिएंटली विदाउट राइटिंग दिस रॉ सीक्वल फॉर एवरी क्वेरी, समझ रहे हो ना। तो ये हाइबरनेट का काम रहता है, मतलब क्या है कि इट हैंडल्स द डेटाबेस operation efficiently without writing raw SQL for every query। और बाकी जावा तो यू नो ओजी, जावा रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड बैकएंड लैंग्वेज सॉरी। तो ये सब चीज़ है। तो राइट पाथ है आई वुड से, या इट इज़ अ राइट पाथ आई वुड से। अगर मैं फिर से बोलूँ तो यस, स्प्रिंग बोर्ड क्या है, मेक इट फास्टर टू क्रिएट प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन। हाइबरनेट क्या करता है, वो हैंडल करता है डेटाबेस ऑपरेशन एफिशिएंटली हैंडल करता है, मतलब विदाउट राइटिंग एनी रॉ सीक्वल फॉर एवरी क्वेरी। एंड जावा यू नो इट्स द ओजी थिंग, तो वो वही है हमारा ब्रेड एंड बटर। तो जावा रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड, आपको ही पता है बैकएंड लैंग्वेज के लिए, एवरग्रीन, राइट। So yeah, that's the thing, and that's the right path, so you can go with it. Let me tell you that you can go with it, and that's a good thing, so carry on with that and study। बाकी बस आप कंसिस्टेंट रहना, बिकॉज जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे ना उतना it will be easy for you to handle the logic and handle the concepts, right। थैंक यू सर, सर ओ थैंक्स सर, अरे वेलकम ब्रदर वेलकम, थैंक्स क्या, मैं आपके हेल्प के लिए ही हूँ, आप लोग के हेल्प के लिए ही हूँ इधर। और बाकी मेरा मेल आईडी भी है, और आपको कुछ एडिशनल जानना है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है, सीक्वल है और पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स है। तो उससे रिलेटेड कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हो मेरा मेल आईडी में, या तो लाइव स्ट्रीम तो मैं रोज करता हूँ, आप उसमें से कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हो, राइट। बाकी ये जावा सी प्लस प्लस ये सब में उतना नॉलेज नहीं है। हाँ उसमें जो आप सीक्वल यूज़ करोगे, या तो आप उसमें कुछ क्वेरीज में आपको कुछ दिक्कत होगा या कुछ आपको समझना है तो उसमें मैं आपको हेल्प कर दूंगा, राइट। तो आपको तो पता है मेरा लाइव स्ट्रीम हमेशा चलते रहता है, ईच एंड एवरी डे। और बाकी मेरा मेल आईडी भी पिंड कमेंट सेक्शन में, आप यू कैन टेक दैट। और बाकी अगर आपको प्रोजेक्ट देखना है सीक्वल का, ये बेसिक प्रोजेक्ट है, तो आप देख सकते हो, मैंने एक्चुअली अपलोड किया हुआ है अपने इसमें यूट्यूब चैनल में, तो वो सीक्वल प्रोजेक्ट है, एंड दैट्स अ गुड प्रोजेक्ट, मतलब बेसिक्स को पूरा ध्यान में रखा गया, एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, प्लस इट इज़ मेनली फॉर द फ्रेशर्स। तो कोई भी फ्रेशर्स है, या आपको अगर कुछ सीखना है रिलेटेड टू सीक्वल फ्रेशर्स रिलेटेड, तो आप यू कैन हैव अ लुक इन दैट। बाकी कॉन्सेप्ट्स भी हैं, कॉन्सेप्ट्स भी मैंने कवर अप किया हुआ है उस प्लेलिस्ट में, तो सब कुछ ऑलरेडी कवर अप है, सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक, राइट।
अरबाज खान लाइक ओके ओनली सीक्वल से भी प्रोजेक्ट बनेगा, हाँ हाँ, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, होता है भाई। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ आज के डेट में मतलब एक्सेल और सीक्वल, मतलब एक्सेल का तो फिर भी उतना नहीं है, सीक्वल इफ यू नो स्टार्टअप कंपनीज विल हायर यू। ओके पाइथन नो नीड, नहीं देखो पाइथन का ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि सीक्वल और पाइथन, मतलब ज़रूरत दोनों का है। अगर आपको सीक्वल आता है, अच्छे से आता है, तो स्टार्टअप कंपनीज विल हायर यू, और अगर पाइथन का ज़रूरत पड़ता है तो सो दे विल ट्रेन यू, करेक्ट। नो नीड टू वरी अबाउट, बट मेक श्योर कि आपको सीक्वल अच्छे से आता होगा। सीक्वल अच्छे से आता है सो इट इज़ गुड टू गो। और रिलेटेड टू पाइथन, पाइथन उतना भी टफ नहीं है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मैं पाइथन का ही प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ, एंड टू एंड प्रोजेक्ट डेटा एनालिटिक्स का। तो पूरा उसमें क्या रहेगा, डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मॉडिफिकेशन, मतलब रॉ डेटा को कैसे क्लीन करते हैं, वो सब कुछ रहेगा उसमें। तो अगर आप वो प्रोजेक्ट देखो ना, आप बोलोगे कि शायद पाइथन ही सबसे ईजी है, क्योंकि सीक्वल में क्या है, 3 लाइन लिख, मतलब 3 क्वेरीज लिख के जो हम काम कर रहे हो, पाइथन में 1 लाइन में ही हो जाएगा। और पाइथन ज़्यादातर ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऑटोमेशन के लिए यूज़ किया है। तो दैट्स द थिंग। सीक्वल सर्टिफाइड करना है क्या, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। बट देखो सर्टिफिकेशन करने में क्या है, आपका सीवी उड़ जाएगा रिक्रूटर के थ्रू, ठीक है। बट द थिंग इज कि अगर आपको इंटरव्यू में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, आपके बारे में बोलना है इंटरव्यूअर को, देन यू हैव टू डू प्रोजेक्ट रिलेटेड टू सीक्वल। ओके कैसे करें, तो या देयर इज सी सीक्वल, अगर आप नए हो सीक्वल के लिए तो पहले बोल रहा हूँ कि आप पहले पैसा खर्चा नहीं करो, आप यूडेमी कोर्सेरा पे अभी मत जाओ, पहले किसी यूट्यूबर को पकड़ो, अच्छा यूट्यूबर जो सीख, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा सीक्वल पढ़ाते हैं। तो क्या है कि किसी एक यूट्यूबर को पकड़ो जिनका टीचिंग और आपका, मतलब कनेक्टिविटी, आपका समझने का तरीका और उनका पढ़ाने का तरीका मैच हो रहा है, तो उनका सीक्वल कोर्स पूरा कंप्लीट करो। एंड देन अगर आपको अच्छा लग रहा है देन गो फॉर सर्टिफिकेशन, ठीक है ना। क्या है कि अगर आप पहले पैसा खर्चा कर दोगे सर्टिफिकेशन में, फिर आपको अच्छा नहीं लगा तो आपको फिर खराब लगेगा कि यार पैसे बर्बाद हो गए। तो मैं इसलिए, कोई भी आता है मैं रिकमेंड करता हूँ पहले आप देखो कि एक्चुअल है क्या सीक्वल, मतलब क्या आपको अच्छा लग रहा है, कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है आपके मन में कि हाँ मैं सीखूं। और देन अगर इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, आप जाओ सर्टिफिकेशन ले लो यूडेमी से, फिर उसके बाद कोर्सेरा भी है, कहीं से भी आप सर्टिफिकेशन लो, दैट विल बी ओके, राइट। Okay, Nick, we have one more question. What kind of automation can you give example? See, automation, I can give one kind of example, like why it will be easy for you to connect. The thing is, every day we used to get raw data when I was working for the finance team in Amazon. At that time, what happened, they used to give us raw data. Each and every day we used to get raw data, right? तो वो रॉ डेटा को वी नो, एवरीवन नोस कि रॉ डेटा में जो डेट फॉर्मेट रहता है, दैट इज नॉट इन डिफॉल्ट फॉर्मेट, मतलब that is it can be in any format like year month date, date month year, date slash month slash year, date dash month dash year, इस टाइप का। तो rather than writing the command each and every time changing the data type, मतलब d types, मतलब डेट टाइम डी टाइप में चेंज करना बार बार से, अच्छा व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट मेड अ ऑटोमेशन का कमांड क्वेरी विथ फंक्शन, जस्ट पेस्ट द फाइल, मतलब वी यूज टू गेट इन मेल। तो एक्सेल फाइल को क्या करो, जो लोकेशन है उसका पाथ है, फाइल पाथ, जस्ट पेस्ट इट in that automation query, run it. What it will do, it will automatically upload, it will check the column row by row, it will change the date format to a default date format. That automation I have done, and we have done lots and lots of automation. This is just a simple one so that we can connect. और finance का automation is much more related to decimal kind of thing, मतलब float में ज़्यादा हम लोग काम करते हैं, right? क्योंकि decimals में भी कुछ अगर अप डाउन हो गया तो there will be a gap, right? And in Amazon अगर थोड़ा सा भी गैप हो जाता है तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी और आपका जो इंक्रीमेंट साइकिल है वो हैम्पर करता है। सो
mostly we are into all this, right? So yeah, this is one of the automation in that. Hi TRX Gaming, how are you? Welcome to live stream. TRX TXR, sorry. Hi TXR Gaming, welcome to live stream. Uh, how to get clients? See, if you ask me, two of the platform was very much useful for me. First thing is Reddit. Second thing is LinkedIn. In total, I have worked for 8 clients. Matlab 8 client I am working right now. Matlab right now it's ongoing kind of project, and 7 clients I have already handled properly and completed their work. So if you ask me, out of total 8, I have received 7 freelance client from Reddit, and उसके बाद 1 freelance client from LinkedIn. So in this way, if you ask me, yeah, Reddit and LinkedIn were for me. If you ask some any other freelance client, or I mean freelance data analyst, for them might be Fiverr, maybe Upwork, that might have worked for them. So for me, yeah, uh, this LinkedIn and Reddit, these two platforms work for me, right? Arbaz Khan, okay, I have knowledge in basics. I have knowledge of basics. अगर आपको basics knowledge है ना, then go for intermediate and start with the project, Arbaz, right? And also there is one platform, आपके पास basics knowledge है तो you have to practice every day from this platform, datalemma.com. शायद आपको पता होगा, like you are into SQL background, so you might be knowing. datalemma.com में क्या है, make a account, और जितने भी फ्री क्वेश्चंस है, इजी लेवल फ्री क्वेश्चंस, यू डू इट, क्योंकि उसमें आपका जो बेसिक नॉलेज है वो यूज़ होगा, राइट? datalemma.com में जाओ, और जो भी बेसिक्स क्वेश्चन है, टेक केयर ऑफ दैट, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड इजी क्वेश्चंस जो है वो आपका जितना भी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, वो क्लियर करते रहेगा। मतलब आप भूलोगे नहीं उस चीज़ को, जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेसिक्स में, वो आप भूलोगे नहीं, ठीक है? तो वो एक ब्रश अप होते रहेगा हर दिन, तो वो आप करो। और सेकंड चीज़ क्या है कि अभी आप इंटरमीडिएट लेवल में जाओ। इंटरमीडिएट लेवल इन द सेंस कि जैसे लीड लैग, मतलब विंडोज़ फंक्शन में जाओ, सीटी वगैरह कवर अप करो। उसके बाद फिर मतलब एक क्वेरी में 2-3 बार जॉइंस यूज़ करो, मतलब 2-3 टेबल्स को जॉइंस करो, वो सब चीज़ आप मतलब स्टार्ट करो करना, ठीक है? तो और इसके बाद रुकना नहीं है आपको, आपको प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करना है, ठीक है? तो आज के डेट में कंपटीशन अगर मैं बोलूँ तो मोर देन 5 to 10 प्रोजेक्ट्स आज के डेट में सब कर रहे हैं, सारे जन कर रहे हैं प्रोजेक्ट। तो आप कोशिश करो कि प्रोजेक्ट्स पे आप ध्यान दो, क्योंकि आप जैसे कि आपने बताया आप थर्ड ईयर में हो, आप फ्रेशर हो, तो आपका स्किल शोकेस करने का तरीका एक ही है, दैट इज़ थ्रू प्रोजेक्ट, राइट? तो आप प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दो और आप प्रोजेक्ट्स करो, राइट? तो मेरे लिए तो यही आई मीन सजेशन रहेगा आपके लिए, राइट? क्योंकि वो मैंने भी किया था, मेरे लिए तो काम किया, और मैं 100% श्योर हूँ आपके लिए भी काम करेगा, राइट? तो एनीथिंग यू कैन गो विथ इट। तो एनी मोर डाउट्स? सॉरी, एनी मोर डाउट्स? Okay, we have one more live chat, like, hi Hitesh. Hi Hitesh, welcome to live stream. Hi Hitesh, welcome to, just a minute, welcome to live stream. तो लाइक भाई पाइथन से थोड़ा डर सा लगता है, अभी स्टार्ट ही किया है, सीक्वल कर लिया, सीक्वल कर लिया है, बेसिक्स तो आपका क्लियर है इसका मतलब। और पाइथन, लेट मी टेल यू, शुरू में थोड़ा मोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सीक्वल कंप्लीट कर चुके हो तो तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा, लेट मी टेल यू दैट। और बाकी पाइथन में डेटा हैंडलिंग सिर्फ दो ही चीज़ से तो होता है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं। पहला तो पैंडास, दूसरा नमपाई। नमपाई तो उतना भी यूज़ नहीं होता, चलो।
MP NP डॉट डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, वही सब यूज होता है numpy के लिए ज़्यादातर, तो pandas में काम आता है pandas। तो यही सब चीज़ काम आएगा। और अगर डर लग रहा है तो नो नीड टू वरी, नेक्स्ट मंथ तो मैं प्रोजेक्ट अपलोड कर ही रहा हूँ रिलेटेड टू पाइथन, डेटा एनालिटिक्स वाला पाइथन एंड टू एंड प्रोजेक्ट। और बाकी मेरा जो अभी सीक्वल का प्रोजेक्ट है वो आप देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा तो फीडबैक देना उससे रिलेटेड। तो सेम थिंग मैं पाइथन में भी करूँगा, नो नीड टू वरी अबाउट। और जो आप बोल रहे हो ना डर लग रहा है, अगर मैं आपको रोड मैप दूं दूं तो पहला इस तरीके से जाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप बेसिक्स पे ध्यान दो। बेसिक्स मतलब वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, इफ एल्स, फॉर, व्हाइल, लूप, इस टाइप का आप वो सब बेसिक्स पे ध्यान दो। आपको ज़्यादा डीप जाना ही नहीं है, डेटा एनालिटिक्स में पाइथन का सिर्फ यही सब बेसिक्स चाहिए। वेरिएबल, फिर डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, इफ एल्स, फॉर, व्हाइल, डीईएफ फंक्शन के लिए। तो ये सब पे आप ध्यान दो, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक बार ये हो गया कंप्लीट, फिर आपका इंटरेस्टिंग वाला लाइन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज पैंडास एंड नमपाई। पैंडास इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि मतलब एक एक आप फंक्शन लिखोगे, पूरा डेटा सेट या डेटा फ्रेम का काम हो जाएगा। आप ड्रॉप एन ए करोगे, पूरा जितना भी नल वैल्यूज है वो हट जाएगा, मतलब इजी है वो। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता है। तो हाँ, मैं कहाँ पे था, सेकेंड पार्ट है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में जो पैंडास आप यूज़ करोगे उसमें डेटा फ्रेम्स, फिर फिल्टरिंग, ग्रुपिंग, मर्जिंग, ये सब चीज़ आपको सीखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जैसे बोले आपको सीक्वल आता है, तो सीक्वल लाइट 3 से तो आप सीक्वल रन कर सकते हो पाइथन में, ठीक है ना। तो सीक्वल लाइट 3 तो है ही पाइथन में यूज़ करने के लिए, तो उसमें डेटा फेच करो डेटाबेस से, एनालाइज करो पैंडास में, और फिर नॉर्मल सा प्रोजेक्ट बनाओ। तो प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्डअप होगा और इजीली कवर हो जाएगा सब, ठीक है। ओके, वी हैव वन मैसेज फ्रॉम अरबाज, लाइक प्रोजेक्ट किस टाइप का होना चाहिए। सी प्रोजेक्ट मैं बोलूँ आपको सारे वेराइटीज के होने चाहिए प्रोजेक्ट। क्यों बोल रहा हूँ, देखो डेटा एनालिस्ट हर चीज़ में यूज़ हो रहे हैं, रिलेटेड टू सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, रिलेटेड टू सपोज गेमिंग सेक्टर। कहाँ मैं बोल रहा हूँ कैसे, ई कॉमर्स सेक्टर चलते हैं, ठीक है। मीशो, amazon, फ्लिपकार्ट। अगर आप ई कॉमर्स सेक्टर वाला कुछ प्रोजेक्ट किए हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना 10 प्रोजेक्ट करो एटलीस्ट, ये सारे कवर हो जाएंगे। ई कॉमर्स वाला कुछ प्रोजेक्ट किए हो तो आप क्या करोगे, जैसे ये सारे कंपनीज के वैकेंसीज आएंगे, amazon, फ्लिपकार्ट एंड ये सब के, आप क्या करना, डायरेक्ट उसको सीवीज में ये सारे प्रोजेक्ट डालना, 2-3 प्रोजेक्ट देखना, उनका एटीएस में आपका सीवी या रेज्यूमे तुरंत पिकअप होगा, ठीक। अब चलते हैं बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग में भी चाहिए होता है डेटा एनालिस्ट। तो आप जैसे कि कस्टमर रिटेंशन का एक प्रोजेक्ट कर सकते हो, या तो इस टाइप का एक प्रोजेक्ट कर सकते हो, इंश्योरेंस सेल्स का प्रोजेक्ट। तो बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी प्रोजेक्ट है जब आप करोगे और आप सीवी में डालोगे उससे रिलेटेड, मतलब आपको टेलर करना है। आप देखो कि ई कॉमर्स मतलब फ्लिपकार्ट वाले में आप बैंकिंग वाला अगर प्रोजेक्ट दे दोगे तो उनका एटीएस पकड़ाएगा नहीं, ठीक है ना, आपका सीवी उठेगा नहीं। जैसे ही एचएसबीसी या एक्सिस बैंक ये सब का अगर कुछ आता है डेटा एनालिस्ट वाला, तो आप अगर ये सब प्रोजेक्ट डालोगे जिसमें इंश्योरेंस का, कस्टमर रिटेंशन का, वो सब में उनका एटीएस ऑटोमेटिक आपका सीवी उठाएगा, और आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू रेडी के लिए। इवन तो और एक चीज़ स्पोर्ट्स सेक्शन का बोल रहा हूँ, किसमें डिकैथलॉन बहुत हायर करता है डेटा एनालिस्ट, ठीक है ना। क्यों क्यों क्योंकि वो भी ई कॉमर्स साइट ही है एक तरह का। वो लोग देखना, वो लोग क्या है कि जितना भी सामान सेल करता है इन अ वेयर हाउस ही सेल करता है, ठीक है। उनका वेयर हाउस ही रहता है एक तरीके से। तो उससे रिलेटेड कुछ आप प्रोजेक्ट करोगे ई कॉमर्स प्लस स्पोर्ट्स वाला चीज़ से रिलेटेड, तो जितने भी कंपनी हैं जस्ट लाइक डिकैथलॉन, एडिडास, पूमा, ये सारे कंपनीज के एटीएस जो है उनका एटीएस में कीवर्ड सेट रहता है। तो वो सब प्रोजेक्ट देख के आपका सीवी सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वेराइटी टाइप के आप प्रोजेक्ट करो, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, सीक्वल से क्या बन सकता है, ओनली सीक्वल, हाँ सीक्वल से ही बोल रहा हूँ, सीक्वल से ही करो, कोई दिक्कत नहीं। सीक्वल इज मोर देन एनफ, लेट मी टेल यू दैट, लेट मी टेल यू सीक्वल इज मोर देन एनफ, ठीक है।
बट लेट एक चीज़ है कि अगर आप एक्सपीरियंस के लिए चाह रहे हो, थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस के लिए, तो पाइथन मांगता है। मतलब आज के डेट में 2 साल प्लस का एक्सपीरियंस में पाइथन डिमांड करता है कंपनीज, तो इसीलिए वहाँ पे पाइथन यूज़ होता है। लेकिन अगर फ्रेशर या 1 ईयर का एक्सपीरियंस होता है तो सीक्वल इज मोर देन एनफ। हितेश लाइक ओके, सी कोचिंग में ले रखा है मैंने, पर सीक्वल जितना इंटरेस्टिंग नहीं है और उससे मुश्किल है। सीक्वल जितना इंटरेस्टिंग, हाँ आई अगर ठीक है, आपको सीक्वल इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है, एक चीज़ बोलूँ, आप सीक्वल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए, दैट्स द थिंग। तो जो चीज़ पे आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, वो तो ऑब्वियसली आपको इजी लगेगा। सिंपल। आप सेम चीज़ अगर पाइथन के साथ करो, सेम प्रैक्टिस सेम टाइम आप पाइथन को दो, तो वही सब हो जाएगा, आपको पाइथन भी इजी लगेगा। नो डाउट पाइथन मेरे को भी स्टार्टिंग में हार्ड लगा था, बट हर दिन प्रैक्टिस कर करके वो जब आदत बन जाता है ना, सेम चीज देख रहे हो, सेम चीज आप बार बार कर रहे हो, सामने आपके सामने पाइथन आ रहा है, आप कर रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, गलत हो रहा है फिर भी एरर निकाल के सही कर रहे हो, तो वो डर हट जाता है धीरे धीरे। सर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, या श्योर श्योर मैं दे देता हूँ लिंक्डइन प्रोफाइल। ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। दिस वन इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल। हाँ हितेश, लाइक ओनली सीक्वल के बेस पर कुछ प्रोजेक्ट है, हाँ है ना प्रोजेक्ट जो अगर मतलब मैंने जो प्रोजेक्ट कराया है मेरे यूट्यूब चैनल में, वो बेसिक प्रोजेक्ट है, बट स्टिल अगर आप चाहो तो अपने सीवी में दे सकते हो, ठीक है ना। मैंने अपना प्रोजेक्ट का भी ये दे दिया है, तो उसमें आप चाहो तो वो प्रोजेक्ट कर सकते हो। मैंने प्रोजेक्ट का लिंक दे दिया है ऑलरेडी लाइव चैट में। वो बेसिक्स प्रोजेक्ट है, आप लेकिन एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, मतलब उसमें हाउ टू डू, मतलब स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेशन विथ क्लाइंट, फिर डेटा क्लीनिंग, रॉ डेटा क्लीनिंग, फिर रॉ डेटा का डेटा मॉडिफिकेशन, फिर रॉ डेटा का फॉर्मेट चेंज। मतलब जब एक मेसी डेटा अपने पास आता है ना, एकदम रॉ डेटा, मतलब बोलते हैं ना जिसका सर पैर नहीं रहता, वो सारी चीज़ें को क्लीन अप करके क्लीन डेटा निकालना, फिर वहां से आउटपुट निकालना, पूरा इस प्रोजेक्ट में है। तो 2 घंटा 30 मिनट का ही प्रोजेक्ट है, बोरिंग नहीं है प्रोजेक्ट, इंटरेस्टिंग है, इसलिए छोटे में रखा हूँ और फ्रेशर लेवल में रखा हूँ, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए कि एक्चुअली बैकएंड में एक डेटा एनालिस्ट क्या करता है, राइट। वो मेन चीज़ है जानना, मतलब आप लोग जो पढ़ रहे हो, वो मेन चीज़ है कि आप क्यों पढ़ रहे हो, वो जानना ज़रूरी है, राइट। तो सीक्वल के बेस पे हाँ हो सकता है। और फ्रेशर, हाँ तो जो मैंने लिंक दिया ना हितेश, यूट्यूब का मेरे प्रोफाइल में ही है, वो वाला आई मीन मेरे प्लेलिस्ट में ही है, यूट्यूब प्लेलिस्ट में। तो उसमें आपको जो वीडियो का मैं लिंक दिया हूँ वो सीक्वल प्रोजेक्ट का है, प्लस वो एक प्लेलिस्ट के अंदर है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में कॉन्सेप्ट्स भी कवर है, तो जहाँ पे आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट्स में डाउट है, आप वो प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हो। नहीं तो मैं तो हर दिन आता हूँ लाइव सेशन में, लाइव सेशन में मेरा हर दिन रहता है, ठीक है। और मेरा मेल आईडी भी है, तो आप मेल आईडी में भी कुछ भी डाउट हो, आप सपोज क्वेरी लिख रहे हो, कुछ एरर आ गया, आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे मेल आईडी में भेज देना, मैं वो भी डाउट क्लियर कर दूंगा आपका, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस प्रैक्टिस करो, हेल्प करने के लिए मैं हूँ लाइव स्ट्रीम में, तो उसका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कि मेन दिक्कत क्या है कि लोग इसीलिए प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि लोग लोगों के मन में एक चीज रहता है कि यार गलत हो गया तो कौन हेल्प करेगा। भाई मैं हूँ हेल्प करने के लिए, आई एम देयर टू हेल्प ईच एंड एवरीवन, और लाइव स्ट्रीम हर दिन रहता है मेरा। हर दिन आप मेरा यूट्यूब चैनल जाके देख लो, 1 आवर 2 आवर इस टाइप का होगा, पूरा लाइव स्ट्रीम है, और सारा ओपन है, जितना भी कुछ भी कॉन्सेप्ट या डाउट क्लियर करना है आप कर सकते हो, राइट। तो आप गलती करो, दिक्कत नहीं, जितना गलती करना है करो, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम गलती करोगे चलेगा, इंटरव्यू के टाइम गलती करोगे वो दिक्कत हो सकता है। और हेल्प करने के लिए मैं हूँ, तो नो नीड टू वरी अबाउट, ठीक है। ये हाय मनीष, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। हाय मनीष, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। ओके, मनीष से हमें
We have received 2 live chat, and that is I have started learning SQL. Yeah, that's a good thing. After completing after complete learning SQL, how much package will I get? See, let me tell you related to SQL. Only SQL you have learned, then first thing first, startup companies will surely hire you. And if you are going to all this metro city location जैसे कि पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, अगर आप जितने भी मेट्रो सिटीज हैं वहाँ आप जाते हो, सो यू कैन गेट इजीली अराउंड 4 to 5 lakhs का स्टार्टिंग पैकेज. लेट मी टेल यू, स्टार्टअप में 4 to 5 lakh का स्टार्टिंग पैकेज इज मोर देन अनफ. वाई आई एम सेइंग, क्योंकि आपको इंडस्ट्री लेवल हेल्प मिल जाएगा, और जैसे ही 1 year प्लस का आप एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, यू कैन इजीली स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम मिड लेवल टू हाई लेवल टू फैंग कंपनीज का इंटरव्यू के लिए. मिड लेवल हाई लेवल मतलब विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, फिर एबीपी, ये सब चीज़. और फैंग तो आपको पता है, लाइक ये आपका हो गया amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल. 1 year प्लस आपको बस टिकना है उस जगह में, तो इजीली इट विल बी, आई मीन बोलो ना, सब रास्ता खुल जाता है. लाइक you will have lots and lots of opportunity, but let me tell you, first salary will be less, like 4 5 lakhs. It is not even less, let me tell you that, because uh, industry level experience is what we actually need as a fresher. तो वो मिल जाएगा as a fresher, let me tell you that. ठीक है. और एनी मोर थिंग? ओके हितेश, लाइक एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन नहीं होता हैकर रैंक का. भाई लेट मी टेल यू वन थिंग, हैकर रैंक लीड कोड का इजी लेवल क्वेश्चन इज टफर. लेट मी टेल यू, इजी लेवल क्वेश्चन, उनका इजी लेवल क्वेश्चन का मतलब हार्ड लेवल है हम लोग के लिए. अगर मैं भी अभी बैठ जाऊं लीड कोड का मीडियम लेवल क्वेश्चन करना है, तो भी मेरे को टाइम लगेगा. नो डाउट मेरे पास 5 years का एक्सपीरियंस है, प्लस फ्रीलांस में 7 फ्रीलांस क्लाइंट ऑलरेडी हैंडल कर चुका हूँ. स्टिल मेरे को जब टाइम लग सकता है, इट विल टेक टाइम, बट डीमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं है, उनका स्टैंडर्ड ही वैसा है. आपका काम है हैकर रैंक या लीड कोड जा रहे हो ना, क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट. एक बार क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लिख के दे रहा हूँ हितेश, नेक्स्ट टाइम अगर आपको नींद से उठा के भी मैं वो क्वेश्चन दे दिया ना, जो आपको 1 घंटा लगा था वो शायद आपको 15 मिनट में, उससे भी कम में आप कर दोगे. बट शर्त यह है कि आप जब सॉल्व करते हो ना, वो अपने से करना है, राइट. सो दैट्स द थिंग. मनीष चौहान, आई एम फ्रॉम मुंबई. या मुंबई में तो बहुत सारे लाइक कंपनीज है, यू कैन चेक दैट, मतलब स्टार्टअप कंपनीज भी है. ठीक है ना. तो दैट्स इट. देर आर कंपनीज है भाई, मतलब स्टार्टअप कंपनीज तो बहुत है, मेट्रो सिटीज है, तो अपॉर्चुनिटी तो है. ठीक है ना. तो यू कैन गो फॉर इट, राइट. सो ओके, वी हैव new viewers. Hi Ahmad, welcome to live stream. Hi Ahmad, welcome to live stream. Welcome to live stream. And hi Kalyani, welcome to live stream. And hi, just a minute, let me greet you all. Hi, welcome to live stream. So first अहमद का क्वेश्चन क्लियर आउट करते हैं, लाइक विच करियर पाथ इज बेस्ट फॉर लर्निंग पाइथन. देखो, वट एवर थिंग्स इंटरेस्ट यू, टेक दैट पाथ. इफ यू आस्क मी एज अ डेटा एनालिस्ट, मैं तो बोलूँगा डेटा एनालिस्ट इज द गुड करियर पाथ फॉर लर्निंग पाइथन. क्यों, वो भी बता देता हूँ. बिकॉज पाइथन का बेसिक्स चाहिए, मतलब बेसिक का बेसिक, एंड देन जो सेकेंड थर्ड स्टेप है उसमें ओनली 2 लाइब्रेरीज से हमारा काम हो जाएगा, दैट इज पैंडाज एंड नमपाई और मैटप्लॉटलिब. दैट्स इट. इतने में पाइथन भी कंप्लीट हो गया आपका, पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स. प्लस आपका डेटा एनालिटिक्स का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या है, कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, क्या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग. Okay, Manish Chauhan, we have one message. Like I plan after SQL, I would learn Power BI. Yeah, sure, sure.
सीक्वल करने जब आप एक अच्छा ग्रिप हो जाएगा ना सीक्वल में, तो पावर बीआई में जाना, पावर बीआई में तो डैक्स वगैरह रहता है, और जो भी लॉजिक आप सीक्वल में यूज कर रहे हो ना, सेम सेम लॉजिक हर जगह यूज होगा, तो नो नीड टू वरी अबाउट। एक बार आपका लॉजिक में ग्रिप आ जाए, पावर बीआई टैबल्यू कुछ भी हो, यू कैन इजीली डू इट, मतलब आपके लिए केक वॉक होगा, लेट मी टेल यू दैट। ठीक है ना? तो नो नीड टू वरी अबाउट, बट द थिंग इज कि आपको सीक्वल में पहले एक अच्छा ग्रिप होना चाहिए, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है? तो वही है। तो एनीथिंग, any more, okay, कल्याणी, वी हैव वन लाइव चैट फ्रॉम हर, लाइक डेटा इंजीनियर का एक पाइपलाइन का प्रोजेक्ट आप ले सकते हो क्या, इंक्लूडिंग ईटीएल? ओके, देखता हूँ, लाइक आई हैव माय मेल आईडी, आप उसमें मेल कर सकते हो, आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट, राइट? आप फ्रीलांस के लिए बोल रहे हो क्या, लाइक फ्रीलांस का काम के लिए, इज इट दैट? तो या यू कैन राइट मेल इन माय मेल आईडी, वी कैन डिस्कस देयर, राइट? करेक्ट? वी कैन हेल्प यू आउट इन दिस, ठीक है? हितेश, मीडियन लेवल नहीं, मीडियन टॉपिक क्वेश्चन, ओके। मीडियम नहीं, अच्छा मुझे लगा मीडियम लेवल क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, लीड कोड का। तो मीडियन कैलकुलेशन मतलब जैसे कि रिलेटेड टू सेट स्टैटिस्टिक्स, राइट? मीडियन मार्क्स उसी का पूछ रहे हो क्या? करेक्ट। लाइक हितेश, अगर आप थोड़ा कंफर्म हो जाओ उसके बारे में, तो आई कैन हेल्प यू आउट इन दिस। हाय संदीप, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। If you don't mind, could you please speak in English? Yeah, yeah, sure. Why not? Why not? Why not? Sandeep, first let me greet everyone. Hi Sandeep, welcome to live stream. And hi Mohammed, welcome to live stream. Hi Mohammed, welcome to live stream. And Sandeep, yeah, okay, I will speak in English. Manish, so how much time it would take to be a good in SQL? If you ask me, 1 hour daily practice, if you do, then 2 to 3 months for basics. For basics, it will take 2 to 3 months. 2 months to 3 months, it's okay for basic. If 1 hour per day, you have to just practice all the concepts, all the logic. After learning all the basics, make sure you start doing questions from data lemma and lead code का easy question. You can start doing that. ठीक है? After that, start learning for the advanced level, and advanced level will take more 3 months. ठीक है ना? तो at least, मतलब at least it will take 6 months to be prepared, to make sure you are prepared enough to get hired in medium level MNCs, जैसे just like Infosys, TCS, Cognizant kind of companies. क्योंकि the thing is they hire for fresher as well, so you can go for that. So that's the thing. And if you ask me, it took me around 5 months of practice in SQL with project to get into, I mean to say, on a good grip in SQL, to get a good grip in SQL, right? ओके कल्याणी, वी हैव वन मैसेज, नो सर, अगर कंपनी में एज अ डेटा इंजीनियर काम करना हो तो, या यू कैन स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू दैट, या श्योर श्योर, व्हाई नॉट? एज अ डेटा इंजीनियर, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर, ठीक है, आप कर सकते हो, मतलब पाइपलाइन प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ईटीएल, बहुत सारे हैं टीचर्स जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सेटअप किए हुए हैं, तो आप उनका प्रोजेक्ट देखो, आप यूज़ कर सकते हो उनके प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंस ले सकते हो, सो दैट्स अ गुड थिंग, you can go for that. And any more doubts you have, anything?
Hey, hi Miraj, welcome to live stream. Hi Miraj, welcome to live stream. हाँ सर, मैं बीएससी मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया, डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहता हूँ बट मेरी स्पोकन इंग्लिश नहीं है, तो क्या मैं सीख सकता हूँ जॉब के लिए? बिल्कुल, देखो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए इंग्लिश फ्लुएंसी के बिना भी आप शुरू कर सकते हो। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट आपका टेक्निकल स्किल्स है। एक बार आपका टेक्निकल स्किल्स कवर अप हो जाए ना, तो जो स्टोरी टेलिंग वाला पार्ट है और कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, वो सेकेंड स्टेज में आता है, तो वो आप ऑटोमेटिक सीख सकते हो। बट आपको किसी कंपनी में जाना है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको टेक्निकल स्किल्स आना चाहिए। आपको एक बार इंटरव्यू क्रॉस हो गया, तो नो नीड टू वरी अबाउट इंग्लिश, आप इंग्लिश ऑटोमेटिक सीख जाओगे, आपका मन करेगा सीखने का, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, आप इजीली सीख जाओगे। तो पहले आप ध्यान दो टेक्निकल स्किल्स के लिए, जैसे सीक्वल, पाइथन, और अगर विजुअलाइजेशन में जाना है तो पावर बीआई, टैबल्यू, ये सब आप कर सकते हो। बाकी डेटा क्लीनिंग एनालिसिस का प्रैक्टिस करो विद प्रोजेक्ट्स। और बाकी स्पोकन इंग्लिश काफ़ी यूज़फुल होता है, मानता हूँ, इंटरव्यूज़ के लिए और बाकी फ्रीलांस क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन आप पैरेलल में एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश तो आप इम्प्रूव कर सकते हो, इतना मेरे ऊपर भरोसा है कि आप कर सकते हो, इतना भरोसा है कि कोई भी कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो, राइट? तो इंग्लिश का बेसिक इम्प्रूवमेंट के लिए साइड बाय साइड यूट्यूब वीडियोस है बहुत सारे, जस्ट प्रैक्टिस का ज़रूरत है, आप करो उसको। और मेन चीज़ है भाई टेक्निकल स्किल्स, वो आप कवर करो। जैसे टेक्निकल स्किल्स कवर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद आपका ऑटोमेटिक मन करेगा इंग्लिश सीखने का, ठीक है ना? आपको कोई प्रेशराइज या फोर्स नहीं करेगा कि भाई तू इंग्लिश सीख। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ तो आपका खुद मन करेगा कि इतना जो मैंने मेहनत से सीखा टेक्निकल स्किल्स, अब वो तो इंटरव्यू में बोलना पड़ेगा, राइट? तो इंटरव्यू में बोलने के लिए तो इंग्लिश आपको सीखना है, सो दैट्स द थिंग, वो ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे, नो नीड टू वरी अबाउट। आपका मन करेगा सीखने का, बट सबसे पहले भाई मैं तो बोलूँ टेक्निकल स्किल्स आप सीखो, ठीक है? और मैथमेटिक्स में आप स्ट्रांग हो तो आपके लिए सीक्वल पाइथन कोई उतना टफ चीज़ नहीं रहेगा, इजी रहेगा सीखना। यूट्यूब में जाओ, कोई भी अच्छा टीचर मिले, उनका लाइक प्रोजेक्ट पकड़ो और सीखो, एंड टू एंड सीखो, इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है ना? नो नीड टू वरी अबाउट, पहले स्किल्स पे ध्यान दो, देन इट इज़ गुड टू गो। और बाकी किसी को कुछ डाउट्स पूछना हो, एनी डाउट्स एनीबडी हैव? एनी डाउट्स? एनी मोर डाउट्स? Okay, we have one message from Ahmad. Like, what about AI, ML, or Django? See, with I would say, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, सो पाइथन में जो लाइब्रेरीज है ना अहमद, लाइक पाइथन विथ लाइब्रेरीज लाइक numpy, pandas, this will let you to learn quickly about this machine learning and deep learning kind of things, ठीक है ना? And related to Django, if you are using MongoDB, which is a web framework that can help you to deploy your AI ML models as an interactive web app or API. So what will this you like where will this be useful? This will help you to make your work accessible to others. So that is the thing about AI ML and Django. And if you want to know much more thing, you can like specific be specific for that. I will help you out in this. And any more doubts anybody have? Anybody have? Anybody have any more doubts? आप पूछ सकते हो. Let me see. Yeah. Oh, so yeah, hi, like Kalyani, we have one more live chat from her. Like, sir, one more question. डेटा इंजीनियरिंग के लिए सीक्वल का एडवांस पार्ट में कौन सा टॉपिक करना चाहिए? लेट मी टेल यू, लाइक कि डेटा इंजीनियरिंग के लिए यू शुड गो बियॉन्ड बेसिक सीक्वल
और जैसे कि आप चाह रहे हो सीखना एडवांस टॉपिक में क्या आएगा, विंडोज़ फंक्शन। विंडोज़ फंक्शन में क्या क्या है, रो नंबर, रैंक, लीड, लैग, ये सब मतलब एज अ डेटा एनालिस्ट इंडस्ट्री लेवल में बहुत काम आता है। और बाकी जॉइंट्स का जो एडवांस पार्ट है, जैसे सेल्फ जॉइन, फुल आउटर जॉइन, क्रॉस जॉइन, मेक श्योर यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन दैट। एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर गोइंग इनटू विंडोज फंक्शन ना, तो सीटी इज ऑल्सो नेसेसरी। सीटी, देन सेट ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्ट, फिर रोल अप, क्यूब, ये सब चीज़ क्या है, एडवांस एग्रीगेशन में आता है। सो दिस आर द टॉपिक्स if you want to know about advanced part in SQL. And that's it you should know about all this if you want to move to advanced part in related to SQL. ठीक है? Any more doubts? Hmm. Any more doubts? Yeah, Hitesh ne, we have one message from Hitesh, like median question from statistics is in hacker rank. I am unable to understand with solution also. See, if you know what median is nothing but a middle value of a data set when it is arranged in ascending order. That's it. That's the basic thing. And if the count of the number is odd, these are the variation. If the count of the number is odd, it is single middle element. If it is even, then the average of the two middle element. That's it. So वही है मीडियन क्वेश्चन का बेसिक्स। और हैकर रैंक रिलेटेड अगर मैं बोलूँ, आप कर रहे हो ना, तो अगर सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू गेट सॉल्यूशन फ्रॉम दिस, let me tell you, just check the solution and practice it from your own side at least 5 times. अगर आप 5 times उसी solution को लेके आप practice करोगे ना हितेश, you will be able to understand what is going on at the background. Let me tell you that. Because the thing is, what I used to do, I also don't used to practice by seeing the solution. So at the end, what will happen, that I used to think कि यार solution देखने के बाद भी I cannot understand anything. But the day I started practicing the same thing by seeing the solution at least 5 times, then it automatically starts setting in my brain. ठीक है? So it is all about practice at the end of the story. Let me tell you हितेश, so please, अगर आप solution देख रहे हो ना हितेश, so at least practice at least 5 times by seeing the solution. Then only it will be very easy for you to understand what actually going on at the background. ठीक है? And uh, any more doubts? Any more doubts? I'm ready to help you out. Any more doubts? Hey, hi Rajesh. Welcome to live stream. Hi Rajesh. Hi Rajesh. Welcome to live stream. Hi Rajesh. Welcome to live stream. Okay, Rajesh, I have asked us two questions. Like, sir, I have. Okay, Gulshan. Oh, hi Gulshan. Welcome to live stream. Welcome to live stream. Just a minute, Gulshan. Let me first cover up Rajesh का doubt. Then I am coming back to you. ठीक है ना? So, hi Gulshan, welcome to live stream, and hi Rajesh. So, let's continue with the Rajesh doubts. Like, sir, I have 3+ year experience in data analytics. Okay, then that's a good thing. Like SQL, Power BI. So, how can I find job? Like, should I learn Python and move to data engineering? See, like, let me tell you, you are in a good stage right now because since you are having 3+ year of data analytics experience in SQL and BI tools, so you can absolutely position yourself for a higher paying or more technical roles. Let me tell you that. So if you want to take a promotional
kind of job offer, then it is okay. Like without learning Python also you can do that. But still, if it is, I mean to say, if Python is being interesting to you, then yeah, it is good to go. Because learning Python, what will happen, learning Python will open the doors to data engineering, like you said. Because why I'm saying it is essential for ETL pipelines, second thing automation, and the OG, big data handling. And if you combine Python with advanced SQL and then cloud platform, I think you might have used cloud platform जैसे AWS S3 Azure, ये सब आप यूज किए होगे. And if you have used that, then you can smoothly do a career transition to data engineering role, which is typically, it pays more and has having a strong long term demand. So there are two options for you. Either you search, like whatever experience you have related to SQL, Power BI, that is, I would say that is good thing to go, because that's the best thing. I would say the experience you have, that is 3+ year of experience, better to take a promotional job transfer from this experience. But as from the second live chat, I can see you have interest in learning Python. Yeah, you can go for it. Because Python, once you learn Python now, I would say your pay scale will be like anything, like it will be very much high. And you, like, don't have to worry anything, at least for next 15 years down the line, let me tell you that. So yeah, this is what I have answer for you, Rajesh. Still any doubt, you can ask me in the live stream. So yeah, hi Gulshan, how can you continuously stream for 4 hours? हो जाता है भाई, like, yeah, it is. Like I will also go to sleep right now, so that's it. Yeah, like, let me tell you one thing. If my live stream is engaging now, like if you all people start asking me questions, then if it is engaging, yeah, then it is good to go. But if it is like थोड़ा boring kind of thing, तो मुझे भी थोड़ा boring लगता है. But the thing is, you all are asking questions, so that's a good thing. Oh, so hi Dev. Oh my God, Dev has given a lots and lots of live chat. Oh, and hi Rajesh as well. Okay, Rajesh, ne, sure sir. Thank you so much for the insight. Yeah, welcome brother. Welcome Rajesh. No issue. And Dev, okay, yeah, Dev, hi, hi, welcome to live stream. Like lots of messages. Welcome to live stream. Let me greet you. Welcome to live stream. Yeah, I've seen your message. I've seen your message. So देख भाई, क्या है कि भैया मैं डेटा साइंस फील्ड में जाना चाहता हूँ. अरे सॉरी क्यों बोल रहे हैं यार, कम ऑन. सॉरी और ही नहीं, मैं पढ़ लिया क्वेश्चन, दैट्स इट, नो नीड टू से सॉरी. चलो भैया, मैं डेटा साइंस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैंने बेसिक सीक्वल कर दिया है. डू आई रियली वांट टू लर्न मास्टर इन सीक्वल? देख भाई, अगर तुम डेटा साइंस फील्ड में जाना चाहते हो और बेसिक्स आता है, तो एक ऑप्शन आपके लिए खुला है, दैट इज स्टार्टअप कंपनीज. ठीक है, स्टार्टअप कंपनीज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कॉलेज से पास आउट हो, आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं, लेकिन आपका अगर बेसिक क्लियर है ना, तो स्टार्टअप कंपनीज आपको इजीली हायर कर देगा. तो ये एक आपके पास ऑप्शन है. करेक्ट. आपको जैसे आपने बोला बेसिक्स आता है, तो यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर स्टार्टअप कंपनीज. बट शर्त है कि आपके पास प्रोजेक्ट्स उतने होने चाहिए, एटलीस्ट 5 to 10 प्रोजेक्ट. ठीक है. बट स्टिल, अब चलते हैं दूसरा पार्ट में, जो कि मास्टर करना है सीक्वल का. तो मास्टर लेवल सीक्वल फिलहाल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल तक आना बहुत ज़रूरी है. लेट मी टेल यू दैट. समझ रहे हो ना बात को? मास्टर लेवल सीक्वल करना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो इंटरमीडिएट लेवल है, मतलब इजी और मास्टर के बीच वाला इंटरमीडिएट लेवल, वहाँ तक आना बहुत ज़रूरी है. लेट मी टेल यू. ठीक है. क्या क्या टॉपिक्स है? जैसे जॉइंट्स, सब क्वेरी, सीटी, विंडोज फंक्शन, एग्रीगेशन, ग्रुप बाय, फिल्टरिंग, इंडेक्सिंग का बेसिक्स. क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि डेटा साइंस में तुम्हारा काफ़ी काम डेटाबेसेस से डेटा निकालने का होता है. ठीक है ना. और मास्टर सीक्वल लेवल में क्या है? जैसे स्टोर प्रोसीजर है, ट्रिगर्स है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग है, ये सब रहता है.
तो वो सब तब यूजफुल होता है जब तुम डेटा इंजीनियर का एक टॉप लेवल में पहुंच जाते हो। टॉप लेवल मतलब जैसे बैक एंड रोल में चले जाते हो, तब वो एडवांस लेवल जरूरी होता है। पर डेटा साइंस के लिए पाइथन, पैंडास, नमपाई ये सब के साथ सीक्वल का स्ट्रॉन्ग बेस मोर देन एनफ है। ओके, डू आई नीड टू लर्न डीएसए? ना ना, नो नीड टू वरी। आप डेटा एनालिटिक्स में जा रहे हो ना, तो डीएसए का उतना ज़रूरी नहीं है, लेट मी टेल यू दैट। अगर आप हाँ वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा रहे हो तो ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। तो ओके, ये हाय हर्ष, हाय हर्ष, आपका चैट एक्चुअली बीच में ही रह गया हर्ष। हाय हर्ष, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। सो हर्ष, कैन वी कनेक्ट योर डाउट? और बाकी देव, कुछ अगर और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, राइट? और हर्ष, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, आपको कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, लेट मी टेल यू दैट। सो एनी डाउट्स, एनीथिंग यू नीड टू आस्क, जस्ट आस्क इन द लाइव स्ट्रीम। कोई भी डाउट्स आपको पूछना हो बिल्कुल पूछिए, कोई भी डाउट्स पूछना हो मैं रेडी हूँ हेल्प करने के लिए, राइट? और एनी डाउट्स, एनीबॉडी हैव, कोई भी आपको डाउट्स हो आप पूछो लाइव स्ट्रीम में, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। any doubts, any doubts, any doubts, any doubts? Doubts. Okay, Dev, yeah, I've received your message. Like, sir, what about, sir, like becoming a machine learning engineer? Do I need to learn DSA? See, let me tell you, if you want to become a ML engineer, na, तो DSA is not the first thing to master. Let me tell you that. ठीक है ना? तो but it definitely help you in long run. So no need to worry about DSA is not the first thing to master in that. तो पहले आपको क्या करना है कि बेसिक्स कवर अप करना है, वो लॉन्ग रन में हेल्प करेगा, देन आपको डीएसए में जाना है, ठीक है ना? तो नो नीड टू वरी, डीएसए जरूरी है बट नॉट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है? ओके, हाय निहार, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। हाय निहार, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। एंड हाय वर्ल्ड ट्रेवल्स, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। हाय वर्ल्ड ट्रेवल्स, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। ओके, तो पहले निहार का हम लोग क्वेश्चन पिकअप करते हैं। जॉब मार्केट फॉर डेटा साइंस, देखो राइट नाउ जो डेटा साइंस जॉब मार्केट है कम्पिटिटिव है बट स्टिल ग्रोइंग, नो नीड टू वरी। स्टिल ग्रोइंग का मतलब क्या है? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, वो मेरा बोलने का मतलब यही है। कंपनीज हायर कर रहे हैं बट दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर नॉट ओनली इन टू थ्योरी बट दे कैन डिलीवर प्रैक्टिकल रिजल्ट। कैसे प्रैक्टिकल रिजल्ट? अगर आप फ्रेशर हो तो वाया प्रोजेक्ट, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, दैट्स द थिंग। और रिलेटेड टू एंट्री लेवल जॉब रोल्स, हाँ, देर आर फ्यूअर कंपेयर टू मिड लेवल, लेट मी टेल यू दैट। सो if you are asking a tip, Nikhil, let me tell you, freshers need to stand out with strong portfolio, internship and good connections, right? And biggest demand is for people who can work with SQL, data cleaning, visualization, this kind of things. And I have if you have seen my YouTube video, like this is my SQL end to end YouTube video, इसमें क्या है कि मैंने पूरा SQL का डेटा क्लीनिंग, डेटा मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेशन किया हुआ है। तो उसमें क्या है, आप एक बार जाके देख सकते हो निखिल। अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन कंटिन्यू विद द SQL का, क्या बोलते हैं, SQL का कोर्स फ्रॉम एनी ऑफ द सर्टिफिकेशन मार्केट, ठीक है? बट
you can have a look in my project like how actually things goes on. जैसे कि आपने बोला ना मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड उन्हीं का है who can work with SQL, then data cleaning with SQL, visualization, and as well as data manipulation, date format change, I mean data format change, each and everything. And those who can connect their work directly to business value, because see, company is hiring you so that you can help them to grow their business. So who can connect their work directly to business value, then let me tell you, they have a much better chance of landing job offers. So Nihar, no need to worry, just have a look at my this यूट्यूब का जो प्रोजेक्ट है, हैव अ लुक इन दैट एंड सी, अगर आप ये सब चीज़ करने के लिए रेडी हो रिलेटेड टू डेटा क्लीनिंग एंड रिलेटेड टू सीक्वल विद डेटा क्लीनिंग एंड ऑल दैट, देन या इट इज़ गुड टू गो, ठीक है ना? तो एनीथिंग एनीथिंग नीड टू आस्क, anything you need to ask, any yeah, hi world travel, sorry I forgot, actually forgot, like MySQL, SQLite, SQL Server, best to learn Oracle. Okay, so see, for starting out MySQL or post gre SQL, ठीक है ना, जो this is post gre SQL is best. And why they are free of cost and widely used? Because for the freelance client whom I am working with, they are mostly connected into PostgRE SQL. So yeah, it is used worldwide. So let me tell you that, and perfect for learning core SQL concept. And SQLite जो आपने पहले बोला, SQLite is, मैं बोलूँ great for practice or small project but not used much in large scale production, let me tell you that. और रही बात SQL Server and Oracle, their name only is more than enough, like they are powerful and used in more enterprises. See, I told you now, by their name only you can say they are very much powerful and used in many enterprises, but they can be more complex, let me tell you this, they can be more complex and often require paid license, जितना मुझे याद है, ठीक है ना? So if you take my advice, just as a elder brother, if you take my advice, yeah, start with MySQL or PostgRE SQL, which I am using this one, pgadmin PostgRE SQL, to build a solid foundation, and later you can pick SQL Server or Oracle if you target companies to use them. So that's the thing, right? And anything you need to ask? Okay, Rajesh, like so according to a market situation, I'm not getting much opportunity in data analytics role. I have got a offer in SQL support role for good package. Should I take it? Yeah, you can take it. If the package is good, then you can go for it, because at least in new companies, like when you start to join new company na, at least you can show them कि देखो my package is increasing and I have knowledge in all these things, so it is good to go. But the thing is, if the package is less and you're getting a promotional kind of transfer or promotional kind of job offer, then also it is good. But let me tell you, at the end, it is all about package, like how much you are taking home back for the hard work. So if you are getting a good package, yeah, you can go for it, you can go for it, Rajesh, ठीक है? देव, ओके सर, मैं नेक्स्ट मंथ में यूके जाने वाला हूँ, मास्टर्स इन एआई कोर्स इन, सॉरी नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। नाइस, ऑल द बेस्ट ब्रदर। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट विल बी माय फ्यूचर? भाई फॉरेन कॉलेज है तो अच्छा ही होगा, बिकॉज सी, मैंने तो कोई फॉरेन कॉलेज से पढ़ा नहीं है, लेट मी टेल यू दैट। ना कि मेरे फैमिली मेम्बर्स से किसी ने पढ़ा है फॉरेन में, तो मैं जो जो चीज़ का वो को आइडिया नहीं है देव, सॉरी टू से, मैं वो बोल नहीं पाऊंगा, लेट मी टेल यू दैट। सो आई होप कि ये अच्छा हो, बिकॉज यूनिवर्सिटी तो अच्छा है और बाकी कोर्स भी डिमांडिंग है। सो बस एक चीज़ है, जा रहे हो तो मन लगा के पढ़ना, दैट्स द थिंग, ठीक है ना? दैट्स द थिंग, जा रहे हो मन लगा के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, एंड मेक श्योर यू आर, आई वुड से, गेट अ गुड फ्यूचर फ्रॉम दैट, ठीक है?
Okay, Harsh, like my interview is on Monday in SQL. Yeah, that's a good thing. That's a good thing. So if you are a fresher, I would say if you have an interview in SQL, then you might have a better portfolio because right now getting SQL interview calls is tough. I know, but if you got a SQL interview opportunity, it is a good thing. You should be mainly focused on the basics things. Basics को question में क्या क्या, if you ask me, it is all about Windows function. Because why I'm saying, as an industrial level data analyst, we have used Windows function like anything. We use Windows function a lot. So Windows function use all that: lead, lag, row number, and rank. These are mostly we have used. That's what I'm trying to say. And subqueries and CTE, mainly during the aggregation kind of thing we use subqueries. Baki CTE to it is an bread and butter, you might be knowing. So these are the things you can cover up and go and like get a good impression on in front of the interviewer, right? So you can go and have a good interview. All the best for that, right? And any more doubts? Any more doubts? Anybody need to ask any doubts? Any more doubts? हाँ प्रतीक, मैंगो सीखना चाहिए आफ्टर लर्निंग माई सीक्वल। देखो, हाँ माई सीक्वल के बाद मैंगो डीबी का आप बात कर रहे हो। मैंगो डीबी सीखना यूज़फुल हो सकता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी बोलूँ, मतलब ज़रूरी तब होता है जब तुम नो सीक्वल डेटाबेस वाले प्रोजेक्ट या कंपनीज में काम कर रहे हो तब। सो दैट इज़ माई ऑप्शन, लाइक दैट इज़ माई टिप फॉर यू। लाइक माई सीक्वल के बाद हाँ, इट इज़ ओके, फिर से बोल रहा हूँ, इट इज़ ओके टू लर्न मैंगो डीबी, बट वो तभी सीखना यूज़फुल होगा जब, मतलब कब मालूम, जब आप नो सीक्वल डेटाबेस वाले प्रोजेक्ट या कंपनी में काम कर रहे हो। सो दैट्स द थिंग प्रतीक, राइट? वर्ल्ड ट्रैवल, थैंक्स, या वेलकम ब्रदर, वेलकम। Harsh Malekar, like what should I focus on? That I told you, like you should mainly get focused on Windows function. ठीक है? You should mainly focus on all this, and also uh, don't get much into complex things. Interviewer will mostly focus कि you might be having a good grip on basics, and they will ask you basics question only. No need to worry about. And whatever project you have done or whatever work experience you have a good grip on that, because they will ask question connected from that things in the sense connected to project, connected or connected to your work ex. So make sure you are having a good grip on that. And because see, recruiter will, how they will get to know what skills you have? Obviously they will ask you from this all things related to project or your work ex. So go with that, get well prepared with that, and that's it. That's it. World travel, like from where can I get freelance work other than common platforms, especially SQL? If you ask me, I have got I have total worked in 8 freelance like clients. 8 is ongoing, 7 already done and dusted. So if you ask me, out of 8, 7 freelance client were from Reddit, and 1 freelance client was from LinkedIn. ठीक है? So if you ask me, yeah, Reddit and LinkedIn work for me. That's it. So that what, if you ask me, this is what answer I have. If you ask to some different freelance data analyst, like for them, if Upwork or Fiverr at work, so for them these two platform will be good. But for me, yeah, Reddit and LinkedIn, these are the good platform to search freelance client, right? Okay. Hi Piyush, welcome to live stream. Hi Piyush, welcome to live stream. So Piyush, what should be the PC configuration for DA in 2025? Any, you can go with any in today's world. Windows or Mac, they are on same thing. मतलब they are on same मतलब platform right now.
So there is no, I would say, any mm, kind of gap in configuration for that. So anything, any Windows or any Mac, it is good to go. No need to worry about that. ठीक है? Anything, any more questions you need to ask? Okay, Nihar, I have one, Nihar have one live chat for us. Is AI technology gonna affect data analytics role? What are all the challenges? Let me tell you, it is nothing like that. At least for next 10 to 15 years, don't worry related to that. Let me tell you. 10 to 15 years, just don't worry for that. But make sure you are learning and excelling, because right now AI is also learning, is on a learning stage. So it will take time for AI to learn, let me tell you. And as a human being, I have more confidence that you will learn much more better than any of the AI if you practice daily. So if you ask me in a one liner thing, I would say AI technology will definitely change data analytics role, but it is more of a transformation than for a replacement. So no need to worry about replacement. Transformation, it can help you in that, and it can also help you to gain logic, like logic building के लिए. But let me tell you, this won't replace anything. And you mark my words, Nihar, like any of the technical knowledge or any of the department who is much inclined into technical knowledge, either it is C++, Java, HTML, JS, Python, SQL, anything technical skilled candidates are safe, let me tell you. Things which are into non-tech kind of department, जहाँ पे you read a SOP and do the work, that things will be automated. That's a red flag, let me tell you. Non technical things, जैसे कि related to you read a SOP, you read terms and condition, and you see the software and you do that work, that kind of thing will be replaced by AI. But all those technical things where technical coding language are used, no, let me tell you, no need to worry, nothing wrong will happen. At least 10 to 15 years, nothing wrong will happen. ठीक है ना? So just chill, but study. Be consistent and study every day. That's what I'm trying to say. Dev, yeah, sir, this is my first time to watch your live stream. Yeah, thank you. Yeah, I know, like, you are my new viewer right now. Like, I've seen in the channel activity. Thank you for that. And I like it so much. Thank you, brother. Thank you. Sir, I have doubt. Is there any connection between Python SQL, for example, data clearing, or do we need to import? देखो, Python और SQL, I would say they have strong connection. Let me tell you, especially related to data cleaning के case में. But SQL, where we use SQL, database में जब directly data filter करना हो, means uh, in SQL we work from a database. So database में directly जब data filter करना हो, directly join, aggregation या cleaning करने के लिए use हो, then SQL is useful. And remaining Python में क्या है, pandas and numpy, these are the things. वो यूज होता है कब, जब डेटा को डेटाबेस से निकालने के बाद एडवांस क्लीनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है. लेट मी रिपीट दिस अगेन. SQL, we use SQL in database, like where the data directly from the database is used to filter, join, aggregate, or clean. At that time we use SQL. But Python, where we use Python we use for the data. When we extract the data from the database, that time for advanced cleaning we use Python. Advanced cleaning, transformation, analysis, we use Python. ठीक है. And if you ask me one liner, तो SQL क्या है, like प्रोसेस इन वन लाइनर, तो SQL क्या है, डेटा को क्वेरी करके एक्सट्रैक्ट करने को वी यूज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लीनिंग इन SQL. एंड फॉर पाइथन, डेटा को इंपोर्ट करके
pandas में फर्दर क्लीनिंग और एनालिसिस करने का जो काम है वो पाइथन करता है, दैट्स इट. सो या कनेक्शन इज देयर बट इन अ डिफरेंट वे. ठीक है. तो मतलब क्या है, सीक्वल का मतलब क्या है, डेटा को रेडी करना, और पाइथन का मतलब क्या है, डेटा को पॉलिश और एनालाइज करना. ठीक है. यू रिमेंबर दिस टू लाइन, यू विल गेट द आंसर. सीक्वल क्या है, डेटा को रेडी करने का जो काम रहता है वो सीक्वल का रहता है, डेटा को रेडी करने का काम. और पाइथन का काम क्या है, डेटा को पॉलिश करके एनालाइज करने का काम वो पाइथन का रहता है. ठीक है. दिस आर द टू लाइन्स. ये दो लाइन अगर आप दिमाग में रख लिए, आपका ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा. इतना मैं श्योर शॉट हूँ. ठीक है. Rajesh, like, sir, if I go for support role, won't it impact my future switch? Like, if is the support role, acha, let me, like, if you can tell me more about the job description, I can be more specific related to that. ठीक है ना? I can be more specific that. ठीक है. Rajesh, like, if you can be, like, if you can give the job, like, my mail ID is there. I know it's a personal thing. Mail ID is there. You can give me, like, you can write a mail in my mail ID, in that related to job description or something. What is your current job role and job description, and what is the, like, new company's job role and job description? You can tell that. At that time I can compare and say. ठीक है. It will be helpful. अच्छा Nihar, what all can I learn by watching your real project which you have uploaded in your channel? Okay, so in that project what we have, as a data analyst, let me tell you, as a data analyst in a freelance world, when freelance client send us the data, raw data, what happens, there are lots and lots of null values, there are lots and lots of duplicate values, there are lots and lots of डेट फॉर्मेट का इशू. डेट फॉर्मेट का इशू मतलब कि क्या है, देखो, एक डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट रहता है इन सीक्वल, दैट इज ईयर वाई 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 डैश एम एम मंथ डैश डी डी फॉर डेट. So when we receive all those data, raw data or messy data or dirty kind of data from our client or from our stakeholder, we have to first clean it. Because if we don't clean it now, like if we don't clean all the data types kind of thing, because sometimes what happen, whatever raw file we get now, the date format is in string format. ये ऐसा भी रहता है, sometimes it is there. I have seen scenarios as well. So when you receive raw data na, you have to first clean it. So in that project, I have shown you end-to-end process. मतलब first receiving a raw data, ठीक है, cleaning that raw data, then data manipulation, data modification. उसका मतलब क्या है data manipulation and modification का? In that you will see कि where null values is there. ठीक है. Your client will say you कि in place of null value, suppose phone number is null, in place of that you write 000-000. ठीक है. This is placeholder in place of null value. ठीक. Second thing, where there is null in mail id, at that time your client will say, or your stakeholder will say, or your manager will say, you write no mail at the rate nomail.com, like this. That is data modification and manipulation, like this kind of thing, that is there in the project. Third thing is date format change, which is really a hectic kind of thing, which as a data analyst I could say you in front of everyone, that is really hectic kind of thing. So that all things means raw data, data cleaning, data modification, manipulation, then date format change, these all things are there in first step. Second step, if you see, we fulfill all the requirements of our client. In that you will see there is a email communication. ठीक है. In email communication, what is there, client says us to do these things, we do that thing and send that mail to client, see we have done that, any more further processing required, then they say no, no, this is not, we need this, like this kind of communication is there. ठीक है. So in this way you will get to know what actually goes behind the scene as a data analyst. So in that project you will get to know each and everything related to communication, communication with clients or stakeholder or manager, related to what we say, storytelling from the data
what whatever the data you receive, whatever the table you receive from the clean data, मतलब raw data, then clean data, then you will get a table, whatever the requirement it is. So from that table, you have to explain to your stakeholder, like this is why I have found out, this is my insights from this table. In this way, this is we call storytelling. So these things are there in my real project, like freelance real project, and that is a fresher kind of project, so that anyone who is new to data analytics, or anyone who want to switch their career in data analytics, they can know, like why I, like they will be having a question in their mind. Freshers will be having a question in their mind, like why are we learning joins, why are we learning group by, why are we changing this date format. So once you see this project now, you will get to know, like why are we learning this, what is the use of it in real world scenario. So that is the motive of the project, and in this way you will be able to know, like what actually goes on behind the scenes of a data analyst, right? केदारनाथ, ओ यश, लूसीफर कैसे हो? नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते. राजेश, श्योर सर, आई विल ड्रॉप योर मेल. या आई हैव माय मेल आईडी, यू कैन ड्रॉप, वी कैन हैव अ टॉक इन माय मेल, ठीक है? थैंक यू फॉर दैट. केदारनाथ, आई जस्ट स्टार्टेड, मतलब यश, आई हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, लिसनिंग टू सम आरतीस फॉर रिलैक्सेशन ऑफ माइंड. या श्योर श्योर, व्हाई नॉट? Peace of mind is very much required in today's world, let me tell you that. And so trying same old accent and using so Hindi. Yeah, sure, go for it, go for it. ठीक है. And I think time भी बहुत हो गया है. It's 12 o'clock, मतलब 12:10, not 12 o'clock. Oh my god. So I think I need to stop my what we say, live stream here. And thank you everyone for joining. Let me tell you that thank you each and everyone for joining my live stream, as well as you have cleared your doubts. Thank you for that. So let's meet tomorrow again in my live stream, and that's it. We will continue with our doubt sessions and career guidance sessions or doubt clearing sessions. Anything you need to ask, I'm there to help you out. Okay? Anything need to know? Okay, Nihal, like what is the salary type for data engineer? फ्रेशर्स के लिए तो वही है, लाइक डेटा इंजीनियर के लिए तो पाइथन ज़रूरत है भाई, तो उसके लिए रिलेटेड टू फ्रेशर, आई वुड से स्टार्टअप कंपनीज ही हायर करेगा आपको, और वो नहीं तो नहीं, 4 to 5 lakhs का दे विल हैव अ स्टार्टिंग पैकेज. और अगर आपका 1-2 years का एक्सपीरियंस है और मिड लेवल एमएनसीज है तो 7-8 आराम से मिल जाएगा. मे बी उससे ज़्यादा, डिपेंड ऑन द इंटरव्यू एंड डिपेंड ऑन द वर्क यू हैव डन इन योर वर्क एक्स. और बाकी फैंग कंपनीज है तो भाई 12 to 15 स्टार्टिंग पैकेज रहता है उन लोग का, बट इंटरव्यू भी वैसे ही टफ रहता है. सो दैट्स व्हाट द पैकेज सिनेरियो इज ऑल अबाउट. या ओके, स्ट्रीम बहुत देर से चालू है शायद. हाँ, राइट राइट, वो भी बात है, बहुत देर से एक्चुअली स्ट्रीम चालू है. एंड आज अच्छा लगा, बहुत डाउट्स क्लियर अप हुए. तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई स्ट्रीम, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माई स्ट्रीम, एंड गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर. तो कल मिलते हैं वापस नए स्ट्रीम, नए लाइव स्ट्रीम में.